Namaskar. We would like to welcome you all on behalf of Independent Research Ethics Society, AYUSH Samriddhi International Conference Series, and due to your cooperation, mentorship, and support, we have been able to reach 1916 milestone, out of which 830 have been conducted within last 365 days. So thank you very much for this fast speed, inspiring us for this fast speed. Thank you very much. I would like to communicate my sincere gratitude to Professor Kamini Dhimanji for inspiring for this webinar series on woman wellness series, Prasuti and Stri Rog. So thank you very much, all of you. Without wasting much time, I hope Kamini ji is somewhere busy and she will join soon. So I would like to request Professor V.K. Agnihotri sir for his welcome address. Thank you, Professor Sharma ji. Thank you so much. Pranam Savi ko namaskar. So we are again here with all of us, and we are having 1916th step in our continuation of webinar series. And today being Saturday, we are having the topic cervical erosions, Narvasha Girva Jan Sharan, and our guest speakers are with us. So I would like to welcome our guest speakers. The first one is Dr. Anita Verma. She is MD PhD, and she is coming from All India Institute of Ayurveda, New Delhi. Welcome, ma'am. And the next one is Dr. Vidya Balal, and she is coming from, she is associate professor and working at Udupi College, SDM College Udupi. So welcome again, Dr. Vidya. Along with our guest speakers, we are good with us, Professor Pawan Sharma ji, Professor Shan Shukla ji, of course, Dr. Sudha, Dr. Surekha Devalkar ji, and Sanita ji, and Tina. All the members, those who are here, Dr. Pushpa Yadav, all the members which are there, they are welcome via our IRES platform. And also those who are joining through YouTube, they are also welcome here. And it's a pleasure that we are continuing this female wellness series with the help of Professor Kamini Dhimanji. So we are really thankful to Dr. Professor Kamini Dhimanji. With these words, we send back this conduction to Dr. Pawan Sharma ji for inviting our guest speakers. Namaskar. Thank you very much, sir. Just for sake of information to new speakers, we have 6,000 subscriber of YouTube channels for whom we are conducting these webinars, and those are also joined from 40 countries of the world. We are expanding our reach to the country. So thank you very much again. And now, without wasting much time, this is only one institute in the world that starts on time, maximum 5 minutes late, and on every day without any gap. Just today, for last 3 hours, we were conducting hybrid seminar on Gwalior Hotel, the Classic Gwalior, where the title was Gwalior Scope and Status of Ayurveda. We want to start Ayurvedic college here, but how far we will be achieving success, I don't know. But our dream is definitely high. So thank you very much. And now I would like to request Dr. Anita Verma from New Delhi. Welcome, Dr. Anita ji. Welcome. Namaste, sir. Namaskar. Namaskar. Sir, may I start, sir? You can share the presentation, don't worry. Okay.
Dr. Sudha. Welcome, Dr. Sudha. I would like to request you to coordinate the session after first speaker. Welcome, Dr. Sudha. Just I have read the message of Kamini ji. Welcome. Thank you, sir. Sure, sir. Sir, is it visible, sir? Your screen is visible, but PowerPoint is being opened. PowerPoint is not opened yet. अग्निहोत्री सर, आप म्यूट हैं सर. हाँ डॉक्टर अनीता, आप अपना स्पीच शुरू कर दीजिए. नहीं नहीं, स्पीच तो ठीक है, लेकिन वो नहीं हो रहा है. सेलेक्ट नहीं कर पा रहे शायद. अपना लिखा तो है कि हम शेयर कर रहे हैं. सर्वाइकल इरोजन, हाँ, इसी को आप सिलेक्ट करके डबल क्लिक करिए, खुल जाए. 30 नवंबर 746 विशाल नहीं खुला अभी. आदरणीय प्रोफेसर रामवीर शर्मा जी का स्वागत है. स्वागतम. थैंक यू भाई जी. प्रणाम प्रणाम प्रणाम. आप आते हैं, चेतना आ जाती. अग्निहोत्री जी को भी प्रणाम सर. सर प्रणाम प्रणाम सर. आप स्वस्थ हैं? बिल्कुल, आप ठीक हो एकदम सर. जब तक ये बिटिया शुरू कर रही है, आप 2 लाइन सर्वाइकल इरोजन पे बोल दिए. मैं प्रीएम्बल में नहीं कह पाया. पीपीटी आ गई सर. आगे तो ठीक है. हाँ, गैप नहीं होना चाहिए. ठीक, आ गई है. यस यस सर, अभी विजिबल है कि? हाँ, विजिबल है. आप पहले जैसा स्लाइड शो की थी वैसा स्लाइड शो कर लीजिए. ये विजिबल सर, बेटा. ये ऑल द बेस्ट. सर अभी है? हो गया. हाँ, यस, क्लियर. ऑल द बेस्ट. Okay, thank you, sir. हो गया. Namaste and good evening all. And myself, Dr. Anita, PG and PhD from PTSR department from All India Institute of Ayurveda. And today I am presenting on the topic cervical erosion, that is Garbhashya Griva Mukh Sharan. And also I want to special thanks to Kamini Dhiman ma'am, who approached me and convinced me and said me to present over this platform. First, we will see the anatomy of the cervix. Cervix is a fibromuscular cervix is a fibromuscular organ that links the uterine cavity to the vagina. It contains the 3 parts, that is endocervix, ectocervix, and the transitional zone. The endocervix is lined by the columnar epithelium, ectocervix squamous epithelium, and the transitional zone, that is the squamocolumnar junction, having a width of the 1 to 10 mm. And it consists mainly of the endocervical stroma and the glands covered by squamous epithelium. This zone always remain under the influence of the hormonal changes and also irritated by the trauma and the infections. So there is more chances of the severe dysplasia, carcinoma, and even the invasive carcinoma at this zone. Cervical secretion, these are secreted from the endocervical canal and having the pH alkaline in nature, that is 7.8. So ये चेंज नहीं हुआ अभी. Erosion. Firstly, we will see the modern view of erosion. Erosion, that is the term derived from the Latin e means of and
A road means worn off, denoting the denudation of the superficial epithelium. Erosion means the ulceration of the lining of the uterine cervix made evident by the bright red or the pink spots around its opening. And it is the condition where the squamous epithelium of the ectocervix is replaced by the columnar epithelium, which is continuous with the endocervix, and it is an ulcerative condition. Epidemiology, it is commonly found in the gynecological condition, and prevalence is 17% to 50%, and increases with the parity and decreases with the age of 35 and above, because the level of the estrogen decreases as we female enter to the perimenopausal or the menopausal phase. The cervical ectropion can be found in the 80% of the sexually active adolescents, and the prevalence is more commonly seen in the patient who use the contraceptive method of oral contraception and puberty intrauterine contraceptive devices. So these patients are counseled for the barrier method of the contraception. Etiology may be congenital or acquired. Congenital that occur at birth. About 1/3 of the cases, the columnar epithelium of the endocervix extend beyond the external os, and it persists for the few days until the level of the estrogen derived from the mother falls, and it heals spontaneously after the birth of the baby. Acquired may be hormonal or infective. Hormonal that I have described under the effect of the estrogen hormone, and it is observed during the pregnancy and amongst the hormone pill users. Infective, it may be associated with the chronic cervicitis cases and may supervene on an ectopy because of the delicate columnar epithelium, which is more vulnerable to trauma and the infection. Cervical ectropion has been associated with an infection due to the chlamydia trachomatis. Also, the areas of ectropion represent an area of the low cell-mediated immunity. The patient who are immunocompromised. In this subpopulation, the T lymphocyte, T helper T cell, CD8 cell, CD1 lymphocytes are reduced in number. And these patients are more susceptible to the infection like chlamydia. And it is also seen nowadays, the hormonal contraceptive, that is the medroxyprogesterone acetate, also have the correlation with the cervical erosion or the chlamydial infection. And also the patient who have the gonorrhea are more susceptible to the cervical erosion. And also the patients who are immunocompromised, that is the having the HIV infections, are also cervical erosion is also seen in those females also. Pathogenesis, as I have explained, the scamocolumnar junction moved out from the os. Here we can define it in the three types, that is the flat type, follicular ectopy, and the papillary ectopy. In the flat type, the replaced epithelium is usually arranged in a single layer. But in the follicular ectopy, it is some advanced, so hyperplastic as to fold inwards to accommodate in the increased area. And in type of the papillary ectopy, it becomes more heaped up to fold inwards and outwards. And underneath the epithelium, there is evidences of the round cell infiltration and the glandular proliferation. We can see this in diagram. This is the ectopy, where the columnar epithelium grows outside the ectocervix. And we can see the three types of the cervical erosion, that is the simple flat. This one is the follicular type, and more heaped up the inward and outward, that is the papillary erosion. Healing phase. After all these phases, the cervical erosion can be decreased over the time by the two processes, that is the squamous metaplasia and the epithelialization. It is the normal and the irreversible physiological process in which the columnar epithelium is replaced by the squamous epithelium. As the metaplasia progresses, the transformation zone moves downwards from its original squamocolumnar junction position towards the external os, thus decreasing the area of the erosion. Epithelialization, it is the process of the cervical remodeling, and in this process, होता क्या है कि there is obstruction of the mouth of the underlying glands. When the healing process take place, जो हमारे cells जो
Squamous epithelium that grows over the columnar epithelium, which contains the mucus secreting glands. If there is obstruction of the mouth of the underlying glands, the secretion is pent up, and this give rise to the retention cyst, Nabatean follicle, or further maybe the Nabatean cyst. As per the area of distribution, erosion can be described very mild type, mild, moderate, and severe, in which the area of the cervix involve less than 20%, in mild 21 to 40%, moderate 41 to 60%, and severe is more than 60%. History. When a patient comes to us, it is very mandatory for us to take the history of the patient, and also go for the PV and the PS examination, because mostly we can see the most commonly the patients are asymptomatic in nature, but the patient when they feel the increased vaginal discharges or associated symptoms, or there may be the that hampering the quality of life of that female, they used to visit the physician, and they usually come with the complaint of the vaginal discharges. That is the most common manifestation. The vaginal discharge may be non-purulent, white or yellowish in nature, but when a superimposed infection can be there, that may be the mucopurulent also. It is due to, I have explained, the mucus secreting columnar cells का जो area होता है, that increase in the case of the cervical erosion. And in the advanced cases, there is a symptom of the postcoital bleeding that is seen in the 5 to 25% of the female, because the fine blood vessels in the epithelium, they torn very easily during the sexual intercourse and leading to the postcoital bleeding. And in cases who the pregnant female, the vaginal bleeding also seen in the third trimester of the pregnancy, who are suffering from the cases of the cervical erosion. The patient may come with a complaint of the intermenstrual bleeding, dyspareunia, that is the painful intercourse, pelvic pain, backache, recurrent cervicitis, and micturition disturbances that may be associated with the burning micturition, itching, or painful micturition. Menstrual disorder, mainly the patient come with the complaint of the menorrhagia also. So we should examine the patient by the per speculum or the per vaginal examination. In the per speculum examination, we can assess the patient for their genital hygiene, menstrual hygiene, and we can assess the patient according to that. And in those cases, we see the status of the vagina and the severity of the cervix, type of the discharge, that we correlate to our type of the treatment. In this picture we can see there is the normal cervix. This is the small type of the erosion, that is mild erosion, and we see the moderate to severe type of the erosion in this picture. We can see the everted columnar epithelium appears reddish on per speculum examination, that is a reddish ring around the external os. We should examine the patient properly, because in such cases there may be a growth, there may be the cauliflower like growth associated with the erosion. So that may be a case of the cancers or the sin also. Evaluation. I have explained that patient generally asymptomatic, and during the pelvic examination, if we see there is a case of the erosion and having the foul smelling discharge, mucopurulent discharge, then we counsel the patient for the pap smear screening also. In the pap smear, we can assess the patient for the inflammatory smears, and they may clear the inflammation, maybe inflammatory smear, or that there may be the cells that may be the malignant in nature. And we can also assess the patient by the high vaginal swab culture. The swab can be taken from the endocervical region or the high vaginal region also. And if the suspected cases come in the pap smear, then we may go for the colposcopy. And in colposcopy, if it is suspected for the malignancy, then the cervical biopsy can be taken for the further evaluation. Along with these specific tests, we should assess the patient for the
blood examination to exclude out any systemic illness like severe anemia हो सकता है patient को, there may be the diabetes mellitus, so we should go for the CBC with ESR, blood sugar fasting PP, and for to rule out exclude out for the STDs we should go for the HIV and VDRL test, and if patient having the complaint of the UTI, then we should go for the urine routine microscopy and further the culture and sensitivity also. If we have any we can go for the USG pelvis in the specific cases if required to rule out any uterus or the pelvic organ pathology. Differential diagnosis can be done with the cervical cancer, cervical intraepithelial neoplasia, infectious cervicitis, chronic cervicitis, vulvovaginitis, and the pelvic inflammatory disease. Management as per modern science, if patient is detected during the purpurium, the treatment should be withheld for the at least 12 weeks postpartum because patient is under the hyperestrogenic phase. And in cases of the hormonal pill users, we should stop the hormone pill and counsel the patient for the barrier method of contraception. But in cases of the persistent ectopy, the modern science principle is that for the destruction of the columnar epithelium, that is followed by its healing by the squamous epithelium. They go for the thermal cauterization, cryosurgery, and the laser vaporization. Now, as per the Ayurveda, it is correlated with the Garbhasya Grivamukh Charan, and Yoni Vyapad that is most related to this is the Karnini Yoni Vyapad. The word Karnini is derived from the Karnika, which means having ears, finger-like projection, barbed wire, the tip of the elephant's trunk, and the furnished with the notes. The condition is due to the development of the Karnika on the Garbhasya Mukh, which is the characteristic feature of the Karnini Yoni Vyapad and is also said to the Garbhasya Grivagat Vran. The main the feature that are given that may be correlated with the Arbud Akriti also, but in Ayurveda it is said to be Sadhya and curable, but Arbud is Asadhya or Yapya Vyadhi, then we cannot correlate it with the Arbud Akar, but it is correlated with the cervical erosion, that is the Garbhasya Grivagat Vrant. And the Doshik dominance is the Vat Kaf dosha according to Acharya Charka, and according to Shushruta Kafaja Yoni Vyapat, and it is curable. As described by Acharya Shushruta, it is the Karninyam Karnika Yono Shleshma Asrikabhyam Prajayate Chatasrishu Api Chadyashu Shleshma Lingo Uchrit Bhavet. Or the Karnikam iti Karnika Karam Granthim. A mass identical to the pericarp of the lotus flower is called the Karnika. It resembles a Masankur or Padma Karnika Akar, etc. And as per the Acharya Charka, it is described as the Akale Vahamanya Garbhin, Pihito Anila, Karnika Janyet Yono, Kleshma Rakten Murchitaha, Raktmarga Vrodhinya, Sataya Karnini Mata. As I have described the before also, Bij Dosha, that is congenital. And we have also explained that all the Yoni Vyapadas are caused by the main four Nidana, that is Mithya Acharin, Pradustartven, Devat or Bij Doshat. So then first cause is the Bij Dosha, that is congenital, that I have described before. Mithya Vihar, that is the modern abnormal mode of life. In this, the excessive coitus leading to the hyperemia, ulceration, and the infection. Artva dosha, that is a hormonal imbalance, hyperestrogenic condition. Training during labor in absence of the labor pains is the main cause described by Acharya Charkaha. During straining, the columnar epithelium of the endocervix advances and replaces the squamous epithelium of infravaginal part of the cervix. Hence, it totally correlates with the modern science also. And Samprapti. According to Acharya Charka, vitiated cough along with Rakt produce Karnika in Yoni, and Acharya Shushruta, sorry. And according to Acharya Chark, due to the straining during labor in absence of labor pains, the Vayu obstructed by fetus with holding cough and getting mixed with Rakt produce Karnika in Yoni.
संप्राप्ति घटक दोष मेनली वात कफ, दूसरा रस रक्त और मांस, स्रोतस आर्प व स्रोतस रस रक्त मांस व स्रोतस, स्थान गर्भाशय ग्रीवा द्वार, स्रोतोदुष्टि संघ टाइप. It is described by a flow chart. Nidan sevan, vikrit ahar vihar, that is excessive katu amla lavan, guru snigdahar. It vitiates kaph dosha and causes the kaph prakop. This kaph prakop causes the jatragni vaishamya, dhatwagni vaishamya, that leads to the amyukta ras dhatu formation and uttar dhatu, that rakt dhatu dushti take place. Also, the katu amla lavan also causes the pitta dhatu प्रकोप and vitiated pitta dosh vitiate rakt dhatu due to the ashray bhav, and it leads to the local inflammatory changes over the cervix, that is shoth, and creamy upsarg, that is the vaginal infection. That may be the external factor that is caused due to any instrumental procedure that is conducted through vagina and the cervix. That may be DNC, recurrent history of the recurrent abortions, and suction and evacuation, that may lead to the superimposed infection to the cervix and the vagina, that may lead to further symptoms, yoni srav, yoni kandu, and this prakupit kaph dosh and rakt and mas dhatu dushti leads to the cervical erosion. Symptoms, mainly the minute elevation at the garbhashay dwar, stimulating karnika, rajomarg avrodhinya, that is obstructed menstruation, infertility may be produced due to the excessive mucus discharges that hinders the acceptance of the shukra, and garbhashay dwar sanvritikram, that is cervical stenosis, may be caused due to the in the chronic condition of the cervical erosion cases. रजोमार्ग अवरोधिन्या और इनफर्टिलिटी इसलिए कोज होगा बिकॉज अगर in case of the chronic cervicitis or the chronic erosion cases, अगर healing take place करती है तो there may be the chances of the fibrosis of the cervix that may lead to the condition that is the cervical stenosis. And vitiation of the kaph dosh that depicts the yoni kandu, pichila yoni, and kaph rakt associated symptoms, that is the cervix appears the bright red in color and sometimes blood stain discharges may be present. On the Karnini Yoni Vyapad or the Garbhasha Griva Mukhagat Vrana, there are so many studies has been conducted in Jamnagar, NIA, and All India Institute of Ayurveda. That is the main I am telling here. That is the Sharkarm and the Agnikarm in management of Garbhasha Grivagat Vrana, and a comparative study of the Agnikarm and Avachurnan in the management of the cervical erosion. Also, one of the study Agnikarm and the electric cauterization in management of the cervical erosion was done in Jamnagar. In Bangalore, the Yoni Prakshalan with Argvadadi Kashai and Argvadadi Varti was used in the Karnini Yoni Vyapad. Also, the Agnikarm with the medicated Varti and the Swarna Shlaka. Comparative clinical study was done for the cervical erosion. And also the effect of the Pipalyadi Varti in Shleshmaja Yoni Vyapad with special reference to Candida albicans was also done. At NIA Jaipur, the Kushtadi Churn and the Udumbaradi Tel in management of Karnini Yoni Vyapad was evaluated. Also the Sharkarm with the Apamarg Shar and Yoni Pichu with Jatyadi Tel was evaluated, and similar study was done. Apamarg Shar and the Dhatakyadi Tal Pichu in the management of cervical erosion was done. And similarly, Palash Shar and the Tankanin Karnini Yoni Vyapad was evaluated. At All India Institute of Ayurveda, New Delhi, in 2017, two studies were conducted. One was the Pipalyadi Yoni Varti and Pipalyadi Vatin Karnini Yoni Vyapad, in which there were three groups. Pipalyadi Yoni Varti in one group, second Pipalyadi Varti, and third group both the Pipalyadi Yoni Varti and Vati was given, and the result were very successful. And in one of the study by Dr. Sudha,
in my senior batch was also conducted in 2016. These both are the batchmates, Dr. Sonia and Dr. Sudha, in 2016. The efficacy of the Kasi Sadi gel was also done in management of the Kafja Yoni Vyapat. And along with this, the antimicrobial activity of this gel was evaluated, and the results were very beneficial. And after the after the treatment, the HVS culture was negative in most of the patient of which were applied the Kasi Sadi gel. And the one of the study in vitro evaluation of antimicrobial effect of Pratifal Haridradvaya when used as gel and Dhupan was assessed in Yoni Kandu. Both in vitro study and the clinical study was done, and it was also have very good effects in case of the cervical erosion. Treatment. Samanya Chikitsa Siddhant. First, we should counsel the patient for the Nidan Parivarjan. This is the foremost treatment principle of Ayurveda. वातग्नि चिकित्सा, because कोई भी योनि व्यापक जो होता है that is not occur because without the visheshan of the vata dosha, and in this case we should go for the snehan swedan and mridu panchkarm procedure. Local application, that is in form of the abhyang, parishek, parlep, and the pralep and yoni pichu was described by acharyas. In special reference to the Karnini Yoni Vyapad in our text, it was these are the treatments which are described. That is Shleshma Haram Sarvam Kuryat. All the measures that capable of suppressing the kapha, that is the kapha kriya should be done. And Uttarvasti with the oil which is prepared with the Jivani Adi group of the drugs should be given to the patient. And the Yoni Varti, the drugs which are having the Shodhan properties, that is the cleansing action, should be used for the Varti preparation, which is described by the Kushtu Pipli Ark Rok salt, which is pastel with the urine of the goat applied locally. These are the specific treatment which are described for the Karnini Yoni Vyapad in our text. Visishta Chikitsa, we should go for the Deepan Pachan Chikitsa because we should assess the patient for the systemic examination, also for the Agni Pariksha also. So we go for the Deepan Pachan Chikitsa. And Chikitsa Siddhant, in all the Kafaja Yoni Roga, Ruksha Ushna Hari Kriya is described. So Kafar Chikitsa to be done. And the special treatment which is described for the cervical erosion or the all the cervico-vaginal infections, that is the Sthanik Chikitsa, because it acts locally on the pathology and treat the pathology very soon बजाय के अभ्यंतर चिकित्सा के. So many studies are conducted on the Sthanik Chikitsa only for the treatment of the cervical erosion, in which the Yoni Dhavan, that is done with the drugs which have the Vranshodhan and Ropan, Kanduhar, and properties. That is vaginal douching should be done with the decoction of the Rajvrikshadi Kashay, Trifla decoction, Kariradi decoction, Trifla Giloy Haridra Kwat, Panchvalkaladi Kwat, Panchanimbadi Chun Kwat can be used for the vaginal douching. Yoni Pichu is very beneficial in case of the cervical erosion because it directly acts on the cervical pathology. And the tela that were used, Udumbar Adi tel, in Pichla Yoni Dhartikya Adi tel, Jatya Adi tel Pichu, Madhuyashti Adi tel, Kasis Adi tel, and any other tel which have the Shodhan Ropan, Kandugn, and Vranaropak properties, then can be used for the Yoni Pichu. The Varti that I have described in our text, Yav or the mash mixed with the rock salt and pestle with the latex of the arc should be placed either repeatedly or for a short time, and should follow the irrigation of the vaginal canal with the lukewarm water. जब भी हम वर्ती रखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको 45 मिनट्स के लिए हम अलाउ करते हैं, और आफ्टर द रिमूवल ऑफ द वर्ती देन
there is a vaginal douching should be done so that any particle of Vati should not be remain there for the localized infection that may जो बाद में हो सकता है इसीलिए Pessary, पिपल्यादिवर्ती like the पिपली मरीच माश शताव्य कुष्ठ and रोगसाल से prepare हो पिछला योनि में indicated a कासिसादिवर्ती in which Dr. Sudha have prepared the Kasisadi gel for that. A pessary which is prepared paste of the Palash Twak, Sarj, Jamun Twak, Lajjalu Mocharas, Dhat ki Pushp. And Sharkarm is very beneficial in the cases of the cervical erosion, in which the Pamark Shar, Yavshar, and the Palash Shar can be applied, and many studies have been conducted for the Sharkarm and have very good result in the healing of the cervical erosion. Localized Agnikarm or Dahankarm can be done. Yonipon or Kalkadharan can be done with the Bratifal Haridra, Daru Haridra Kalk, which are indicated in the Kafaja Yoni Vyapad by Acharya Shushruta, Pratifal Kalkasya, Dvi Haridra Yutasya Cha, Kandumati Malpasparsham, Purye Dhupye Tatha. तो उसका धूपन एंड पूरन दोनों इंडिकेटेड है फॉर in the cases of the cervical erosion. Yoni Dhupan, Vratifal Haridra or Daru Haridra Chun that can be done and can be done by with the help of the Sarla Gugulu or with Tal Aplukt Katu Matasya also. Abhyantra Chikitsa. I have collected these old drugs from the Yoni Vyapad text in which we can do the Dipan Pachan Chikitsa with the Vipattikar Chun, Hingwadi Chun. Vati that can be used the Chandraprabha Vati, Trifla Gugulu, Yogaraj Gugulu, Mahayogaraj Gugulu, Kokshuradi Gugulu, Pradrantak Loho, Chandanadi Loho, Punarnavadi Mandur, Lagu Malini Vasant Rasa, Bolbhadra Ras, Nishamalaki Vati, Giloygan Vati, Kankayan Vati, and chun that can be used that is Pushanuk chun, Lodra chun, Amalki chun, and Haridra khand, Pug khand, and Supari pak can be used. Avlehe, Pushmandavle, Brahma Rasayan, Kutjastak Avlehe, Drakshavle can be used. Grit that may be the Shatavari Grit, Fal Grit, Dadimadi Grit, Draksha Grit can be used. Durva Swaras can be given to the patient that is indicated in the patient of the brother. And Asavarist that can be given to the patient are the Lodrasav, Ashokarist, Patrangasav, Drakshasav, Rohitakarist, Argvadadi Kashai, Rasna, Adi Kashai, Falprikadi Kashai. These are the some cases that I have collected, and this study was done at our institute, in which the effect of the Pipalyadi Varti and the Vati on the cervical erosion was seen, and it has shown the very good result. In this, the Pipalyadi Varti was applied for 7 days and Vati was given for the 21 days. And in the Pathya of the for the patients, it was advised that Pipli Ayoraj and Pathya Prayoga Madhuna Hita. ये बताया गया है कि ये पथ्य होते हैं for the patients of the cervical erosion. And local application of the Kasisadi gel. This is the picture that is describe the condition of the patient before the treatment and after the application of the gel for 7 days, 2 times a day. It has shown very good result and healing of the erosion. Using the Yoni Dhupan over the cervical erosion, but it was seen that the patient who are having the mild to moderate type of the erosion, they are healed where they have very good healing after Dhupan, because in the severe erosion, there is the inflammatory changes are more, so it may cause the irritation or burning. So in cases of the mild to moderate cases of the erosion, the Yoni Dhupan have very good result using the Pratifal Haridradvaya. This is the case that I have find out in one of the article, in which the Yoni Prakshalan with Panchvalkal Adikvat was done for 7 days. Yoni Shar Lep was done with the Pamark Shar for 1 day, and Yoni Pichu with Yashti Madhu Adityal have done for 7 days, and it has shown very good result within the 7 days over the cervical erosion.
So we can say the Ayurvedic treatment modalities have very good results in the cervicovaginal inflammatory conditions, and we can use so many of the preparation for the treatment of the cervical erosion, and in the vulvovaginitis, cervicitis. Then we should use the local sthanik chikitsa for the treatment of such type of the cases. Thank you one and all. Thank you. Excellent presentation, Dr. Anita. Excellent presentation and oration. God bless you. All the best. Dr. Sudha. Welcome, Dr. Sudha. Thank you, sir. Thank you so much. Dr. Sudha ji. Please unmute. Please unmute. You are mute. Okay. Thank you, sir. I am audible, sir. Yes. Thank you so much, sir. Congratulations, Dr. Anita, for your nicely. Thank you, Dr. Anita, for your nice presentation on the topic cervical erosion in an understandable manner. You have covered all the aspects on this topic, cervical erosion, both ancient and modern views, and also focused very vividly on the researches conducted on the cervical erosion. You have shared your practical experiences on the topic cervical erosion also. No doubt it's a very small topic, cervical erosion, but it is having a great importance in manifesting various gynecological disorder, starting from abnormal vaginal discharge, leading to serious issues like infertility. जैसे cervix is, we know cervix is the door to uterus. So any pathology in cervix can also lead to the hindrance in uterine environment. It also leads to the difficulties in conception also. So जैसे during our PG studies, यूजुअली रेस्पेक्टेड कामिनी मैम यूज टू से कि एक अच्छे जमीन पे अच्छे पेड़ उग सकते हैं, फल प्रदान कर सकते हैं। तो जैसे गर्भ संभव सामग्री में भी बताया गया है ऋतु क्षेत्र अंबु बीज, these four are the parameters for giving a good conception. So here we can consider the Kshetra, where here we can consider the cervix under the Kshetra and cervical erosion under the Kshetra Dushti. So if the door to the uterus is good, it can lead to a healthy uterus. It can lead to a good conception also. So cervical erosion is no doubt it's a benign condition, but if left untreated, it also can lead to the malignant condition. So during our PG studies, Dr. Anita was my junior, and on cervical erosion, spontaneously at a time 3 studies were done that time. Already Dr. Anita has told about these 3 topics. One was my topic on the vulvovaginitis, that is applications of Kasisadi gel, but cervical erosion was one of the parameter to judge the efficacy of Kasisadi gel on the cervical erosion. So also I got very good result that time. And another topic was of Dr. Anita. She has conducted the Yoni Dhupan by Bruhatyadi and Haridradi Churna. And that time we saw very good result on the cervical erosion also. And another topic was on the Pipalladi Varti. And these 3 studies were conducted very nicely, and we got very good result. So again, many congratulations to Dr. Anita. She has covered very nicely.
Thank you so much, Dr. Anita. Thank you, Dr. As we Sudha. all Thank you. Okay. As we all know that we have two sessions, two speakers in these sessions. So next speaker is Dr. K. Vidyavalal. Good morning, everybody. I'm Dr. Vidyavalal. I would like to invite Dr. K. Vidyavalal, who is Associate Professor in the Department of Prasuti Tantra Stri Roga, and she has finished her BMS in Government Ayurveda College, Tiruvandrum, and she has done her PG and PhD from the Institute of STM College, Ayurveda and Research Center, Udupi. Please welcome, ma'am. Please present your topic. Please welcome, ma'am. Thank you so much for giving me a good introduction. I'm not going as deep as Dr. Anita has done, but I hope I'll be able to tell something about cervical erosion. Good morning, everybody, and thank you for inviting me to give a talk on cervical erosion. So, as I said earlier, I am not going in detail about as Anita Madam has done. I am not going in detail. Mine will be concentrating more, if so, on the clinical aspects. So, with great, I'm also thanking Dr. Kamini Dhiman for giving me an opportunity. And with pranam to my Dhanvantri God, I am giving my talk on cervical erosion. See, in today's existence, we know that people come to us with complaints of vaginal discharges. The vaginal discharges can range from a small licoria to a place, to a condition where you find that there can be heavy vaginal discharges. So if the presentation goes there, sometimes we say a small girl of 10 years who complains of pain and white discharge to the vagina. I have had a case, I have had an experience where my madam had a small girl who had come to the OPD with white discharge. The mother had brought the girl to the OPD with white discharge. And there the white discharge was because of the white vaginal discharge was because of a foreign body that was inserted into the vagina by the girl. So as I said earlier, vaginal discharges can vary from even in young girls to an old lady also. So same vaginal discharge, I'll tell even in girls now, pre-pubertal age also, you can find that there is a lot of vaginal discharges that can be seen. So those you find that before the girl goes in for menarche, there can be vaginal discharges that can be seen. But all this type of vaginal discharge is considered to be very safe. So a pre-pubertal girl complains of wetness or discoloration in the panties, more so in the night. This is because of certain hormonal changes that is taking place, preparing the girl for menarche and menarchal changes. So you find that there also it is a physiological discharge that can be seen. You find a 32-year-old Paris woman presented with complaints of lower abdominal pain and abnormal vaginal discharge. There is also, there is rise in temperature, and a PV examination reveals cervical motion tenderness, uterine and adnexal tenderness. So this is a case of PID, where you find that the girl also presents herself with vaginal discharges. A postmenopausal lady also comes with excessive vaginal discharges. Could be because of, even though the lady has attained menopause, it could be because there can be some fibroids in that is causing the vaginal discharges. Because I have seen a lot number of patients with just fibroid as a history coming with vaginal discharges. But the vaginal discharges are not so severe. And a perimenopausal lady will come with high excessive vaginal discharges is also visualized. So vaginal discharges, which is one of the most common discomfort that is seen in women, and for which she comes to our clinic or to our hospital for treatment. This is one of the common discomforts that can be seen in a lady, by which she presents herself to the hospital. And the pathology of the lesion is not as severe as the inconvenience caused to the woman as in cervical erosion. For example, if I say that the patient comes to me with a white discharge, it could be a plain white discharge, which could be a licoria type of white discharge, or it could be because of a cervical erosion, or it could be because of, mostly cervical erosions are always associated with
chronic cervicitis. It could be because of chronic cervicitis. So the presentation would be that the patient will come to you with a white discharge, which could be a medication might not be needed, as it can be in a physiological condition or in a pathological condition in cases like cervical erosion and others. These discharges range from pure white discharges called leukorrhea to a state of malignancy like cervical cancer with postcoital bleeding or contact bleeding or heavy bleeding disorders. Here I would like to include one more point. We in SGM, we are in collaboration with KMC, and we are doing a study on cervical, detecting cervical HPV virus. So what we are doing with them is we are collaborating with the European countries, and they have given us a swab. So it is a self swab that has been given to the patient to assess whether she is having HPV virus or not. So this is to such an extent also, we are giving care to the women so that we can prevent further complications of the reproductive system. So commonest white discharges can range from watery white discharge to thick curdy white discharges, as seen in a number of gynecological cases. Now, for example, I'll tell you, as in seen in leukorrhea, the patient can complain that there is white discharge per vagina, and the only symptom that you find in her would be something like a dhatukshaya. But if you go further, then you see further, if it is from white discharge to mucous discharge or curdy white discharge, where there is an involvement of microorganisms, then you find that it becomes an infective type of discharge. Gynecological problem in women with white discharge will also be associated with foul smelling discharge. There can be foul smelling discharge also. The patient also can complain of itching at vulvar region, and burning micturition can be a co-added symptom that can be seen. So cervical erosion is a condition seen in the age group of 20 to 40 years with more of kapha predominance. So even though we see cervical, or even though we compare cervical erosion to Karnini univapath or Karnini univapath to cervical erosion, you find that even though the univapaths are involved with vata, but there is a predominance of kapha in cervical erosion. And the same can be seen even in patients having Karnini univapath. So going directly to the definition, cervical ectropia, also known as cervical erosion or ectopy, is a condition where the squamous epithelium of the ectocervix is replaced by the columnar epithelium, which is continuous with the endocervix. So as Dr. Anita has already mentioned, we have the cervix, which is an endocervix with an endocervix and an ectocervix. So you find that there is the columnar epithelium, which replaces the squamous epithelium of the portio vaginalis. So then you find that the area becomes red in color. Usually, along with that, we also see that it becomes edematous. And as she has already told earlier, a reddened area on portio vaginalis around external os due to the outgrowth of the columnar epithelium replacing the squamous epithelium of the portio vaginalis is how we see as a presentation of cervical erosion. Clinical types are congenital, which is seen in newborns, and that is because of the maternal estrogen that is circulating in the newborn that you find that there is a congenital cervical erosion, which subsides by itself. Acquired can be of two types. Either it can be hormonal or it can be infection. See, there is also one condition known as virginal erosion in virgin girls, or a simple erosion, which can be seen in pregnancy, which needs no treatment, where the patient takes oral pill intake, then there is supplementation. That is why we say that probably these cervical erosions are influenced by estrogen and progesterone, because these factors, that is, when there is high estrogen in pregnancy, also you can find there can be simple erosion, or when the patient takes in more of oral pills, for example, either estrogen alone or estrogen progesterone combined pills, you find that there is something like excessive vaginal discharge that can be seen, or that which can lead to a cervical erosion. And in purpurium, sometimes whatever our classical text says in the form of avahamanaya, where they strain without any cause, there is no chance for straining. Still, the patient strains, especially in a garbhini, and when she is in labor, she strains without any labor pain. It causes some complications. There is the vayu that gets aggravated along with kapha and rakta, which causes a cervical erosion. So you find that this presentation is seen mostly in the purpurium. So thereby, in purpurium ladies also, you find that there is cervical erosions. After menopause, it gradually regresses. We always have a fear that probably erosion, some cervical erosion means it might be something like an ulcer or something like a precancerous lesion. As I told you, not every case will become an ulcer or a precancerous lesion. There is chances that sometimes
with, suppose, for example, as I said, if there is an HPV virus, and then there is again trauma to the cervix, and again there is excessive white discharge which does not get controlled, then probably later in life, maybe in a lifespan of another 5 or 6 years, the patient can go in for a cancerous lesion. So the types, as she said earlier, it can be simply that we see is in the form of papillary erosions. Papillary erosions means we just see the cervix and we see that there is a reddish area. So the reddish area could be having small pustules or papillary-like things. So then we with these papillary erosion, and there the cervicitis. That's why I said cervical erosion sometimes can be associated with chronic cervicitis. And a follicular erosion, which is squamous epithelium, regrowths towards the external os, blocking the neck of the glands, causing retention cysts on the surface of portia vaginalis. These retention cysts are known as Nabatean follicles. Later they become Nabatean cyst. Now, the clinical features, as said in the form of symptoms, would be persistent white discharge or leukorrhea per vagina. It can be from a plain vaginal discharge, as in the form of leukorrhea, to a persistent white discharge, which can turn into a mucoid or a purulent discharge can also be there when there is infection also associated with that. It usually upsets the patient. So you find that psychologically the patient will also be upset. That is why she comes to you, because there is always wetting of the panties. There is always the discomfort that is the patient feels. And that is why she comes to a gynecologist. Sometimes the patient would have no symptom at all. Even with cervical erosion, the patient would have no symptom at all. Sometimes the patient will also be having postcoital bleeding. This happens when there is an erosion with high vascularity. Then you find that postcoitally there can be a bleeding, which we also call it as contact bleeding. As I said, it is also associated with cervicitis. There can be itching at the vulvar region. Sometimes the patient will also present herself with burning micturition. The signs of the same cervical erosion would be, what we usually do is we go for a speculum examination, and this is diagnostic. And when we go through a speculum examination, if we see a red granular surface with well-defined margin on the cervix around the external os, then we confirm it as, or we diagnose it as a cervical erosion. Both the surfaces of the cervix are commonly involved. Papillary type, you find that the papillae are visible on the eroded area. Follicular type, you find that the surface shows multiple small, pearly white, translucent nodular elevations, which further goes into Nabatean cyst. And per vaginal, the uterus, when you palpate, it would be normal in size, mobile with clear fornices, and vaginal cervix is felt normal in all cases. But if it is also associated with a bulky cervicitis, then, if it is also associated with a chronic cervicitis, then there is always a possibility of the uterus or the cervix, usually the cervix being bulky or hypertrophic. These are the signs of erosions. Diagnosis is by clinical examination. You go for a PV examination, you see it through the pervaginal examination. You go for a per speculum examination, you see it, and it is by visualization only we know that there is an erosion that is there. Pap smear is done in all cases to rule out CIN. So the first thing that we usually do is we go for a Pap smear and see whether there is any CIN or not. Now, if there is a Pap smear which comes positive, the next thing that we can go is for colposcopy. Before we go for colposcopy, we also have the VIA that has been done. So when in cases of suspicion, we go for colposcopy. And we have to diagnose or differentially diagnosis from ectropion, early carcinoma, primary lesion, and tubercular ulcer. So again, cervical ectropion is a condition where cells from inside the cervix form a red inflamed patch on the outside of the cervix, which is also known as cervical erosion. And it is not usually a healthy concern. However, because of the way it looks, now, as I told you, once we see the cervix, usually we see it as a white or it is pinkish in color, and it is clear. But once we see something like an wound, something like an abrasion, then it's of something of concern. However, because of the way it looks, it can be hard to distinguish from the early stages of cervical cancer. For this reason, it is essential to understand or to differentiate between the two conditions. Causes. There are hormonal causes that has been said. Cervical ectropion may be caused by fluctuations in the hormone levels and is most common in women who are of the reproductive age. Women who have gone through menopause rarely get cervical ectropion.
taking or those people who are taking contraceptive pills. As I told you, under the influence of the hormones that are there in the contraceptive pills, they can cause cervical ectropin or cervical erosions. Pregnancy, as being pregnant, may cause a hyperestrogenic condition. That itself is one cause for cervical ectropin. The symptoms of cervical ectropin are caused by the delicate glandular cells that appear on the outside of the cervix. They produce mucus and bleed easily, which may lead to spotting and pain during or after sexual activity. The risk factors are cervical ectropin is induced by high levels of estrogen. I have told you there is a high hormonal influence. That is why we see it present in conditions of pregnancy where there is a hypoestrogenic condition, or in conditions of pill intake, where you find again there is a hypoestrogenic condition. Therefore, factors that increase the risk of ectropin are related to those that increase the levels of estrogen. As also use of combined oral contraceptive pills, pregnancy, adolescence, and menstruating age. Usually it is postmenopausal, it regresses. It's not usually safe. The cervix is a lower portion of the uterus. It is composed of two regions, the ectocervix and the endocervix. The endocervical canal, which is the more proximal one, and the inner part of the cervix, it is lined by mucus-secreting simple columnar epithelium. And this columnar epithelium, it moves outside and it replaces the outside of the posterior vaginalis area of the vagina. Ectocervix is a part of the cervix that projects into the vagina. It is normally lined by stratified squamous, non-keratinized epithelium. So the columnar epithelium replaces the squamous epithelium, causing cervical erosion. In cervical ectropin, the stratified squamous cells of the ectocervix undergo metaplastic change to become simple columnar epithelium. This change is thought to be induced by high levels of estrogen. The columnar epithelium contains mucus-secreting glands, and thus some individuals with cervical ectropin experience increased vaginal discharge. It may also give rise to postcoital bleeding as well as the fine blood vessels, since the fine blood vessels present within the epithelium are easily broken during intercourse. Symptoms, as I told you, the transformation zone, that is the primary symptom that you find that there is the red inflamed patch at the neck of the cervix. This transformation zones look red and inflamed because of the glandular cells are red, delicate, and easily irritated. Other symptoms a woman may experience might be pain during intercourse, bleeding during and after intercourse, light discharge of mucus, spotting between periods. And some women will only have mild symptoms, while others will experience severe discomfort. Diagnosis is by PAP test, also known as pap smear. This involves a healthcare professional scraping a small sample of cells from the cervix to test for human papillomavirus and cancerous or precancerous cell changes. As I told you, nowadays we have got something which is an artificial intelligence that which we have collaborated with the KMC, where there is a swab, self-swab. We do not have to do a PV or a PS. The patient herself does the swab. She inserts it into the vagina. She gives one rotation and she gives it back to us. It is sent for examination in the lab. And if there is an HPV virus present, then further investigations in the form of VIA and colposcopy has been done. Colposcopy, this is when a healthcare professional examines the cervix more closely with bright lighting and magnifying instrument. Biopsy, when you find that there is a positive colposcopy, we use a biopsy instrument to remove a part of the cervix and send it for testing. This is when a small tissue sample is taken, tested for cancerous cells. The woman may experience cramping during the procedure. Investigations. Cervical ectropin is a clinical diagnosis. The main role of any investigation is to exclude other potential diagnoses like pregnancy test, triple swabs if there is any suggestion of infection such as purulent discharge, endocervical and high vaginal swabs should be taken, cervical smear to rule out cervical intraepithelial neoplasia. If a frank lesion is observed, a biopsy should be taken. Treatment. This is modern aspect treatment where they do either diathermy. This uses heat to cauterize the affected area. Along with that, we also have got, along with this, as I told you, in this project, we also have got a diathermy instrument. So we have got, it is something like a needle-like thing. And either we can say it is a pointed thing, which we have to apply to that particular area. And you have to thaw and you have to increase, that is, you have to first increase the temperature. So you cauterize that area and then you thaw it. And after you thaw it, you remove the diathermy. So cryotherapy, this uses very cold carbon dioxide to freeze the affected area. So this is also a 2016 study found that this to be an effective treatment
for women with cervical ectropion who were experiencing a lot of discharges. So as soon as the procedure is been done, the patient will complain of excessive discharge. But we have to explain to them, we have to counsel the patient saying that these procedures will cause excessive discharge, which is just a healing process of the cervical erosion. Silver nitrate, this is another way to cauterize the glandular cells. After the treatment, the doctor may recommend that a woman avoid some sexual activity and use tampons for up to 4 weeks. After this time, her cervix should be healed. If a woman experiences any of the following after the treatment, she should go back to the doctor when there is discharges that smells bad, if there is heavy bleeding, or if there is ongoing bleeding. The cervical ectoprine is regarded as a normal variant and does not require treatment unless it is symptomatic. Some ladies go asymptomatic. First line of treatment is to stop any estrogen-containing medications. Since it is a condition where you find that it is influenced by hormones, so those people who are on pill, especially estrogen-like pills, they should be avoided, or they should be asked to stop those pills. Most commonly, the combined oral contraceptive pills. This is effective in a majority of cases. If symptoms persist even after stopping the pill, then the columnar epithelium can be ablated, typically using cryotherapy or electrocautery. This will result in significant vaginal discharge until healing is completed. Medication to acidify the vaginal pH has been suggested, such as boric acid pessaries. Coming to the Ayurvedic aspect, we are on this topic like a Karnini Yoni Vyapat. Now, Karnini Yoni Vyapat, according to all acharyas, they say that there is karnika akara, something like an ear-like projections are seen. So karniniam karnika yono sleshma asrikbhyam prajayate chatushapi chadyasugu sleshpalingoche bhavit. Akale vahamanaya. Here there is, I think we can take it in one more sense. Akale vahamanaya garbena peto anilaha karnikam janeyet yonoho sleshmarektena murchitaha. We know that when the patient is in labor and she strains heavily without uterine contractions, then there is a possibility that garbena pihito anilaha, the vata which has been obstructed by the garbha, along with sleshma and rekta, it can cause certain karnikas or certain, certain ear-like or certain projections that can be said. And it causes rekta margam avirodinyaha sataya karnini mataha. So there is a Rajo Marga, Avarodha is there. So with this, we have to understand that probably the Rajo Marga would be in the cervix. So with this conclusion, we can take it that probably the development or the ear-like projections are seen in the cervix. Refers to the seed capsule of the lotus flower, the minute protuberance at the Garbhashaya Dwara, due to the morbidity of the Pitta and Rikta resembling the Padma Karnika or pericarp of the lotus is known as Karnini Yoni Vyapat. Now, when I say Pitta and Rekta, we know that there is Ashraya Shribandha, and that's why we have included Pitta and Rekta. But everywhere we find that there is Vata involvement along with Sleshma and Rekta. An elevated lesion at the Garbhashaya Griva characterizes the Karnini Yoni Vyapat. The lesion is said to simulate the pericarp of lotus flower in appearance. Nidana is Samanya Nidana, as said for all Yoni Vyapat, can also be included for Karnini Yoni Vyapat. But Vishesha Vidana, he says that Vagbhat and Charakacharya state Akala Vahamanaya. That is, there is excessive straining without the bearing down pain. So we can summarize etiological factors for Karnini Yoni Vyapat as Mithyachara. Mithyachara means excessive coitus. When there is excessive coitus, or if there is hormonal Artava Dushti, then there can be excessive estrogen, hyperestrogenic condition, which can cause cervical erosion. Pradushta, as I said earlier, Bija dosha, congenital, as we already know that modern people also classify the cervical erosion as congenital and acquired. Deva and Akala Vahamanaya. According to Indutika, Akalavat Apraptaha Ambavat. No, this understanding shall we take it as when there is no liquor. See, we usually find that in an Garbhini, when there is, I do not know if I'm correct or not, this thought came into me that probably when there is less of liquor and the patient strains, or with the liquor passing of the patient strains without any pain, probably this can lead to certain factors in the cervix which can get elongated or which can change and which can cause an erosion in the puerperal stage. This is due to premature ejaculation of fluid brought about by untimely straining. The aggravated Vayu withholding Kapha and Rekta produces Karnika in Yoni, which is seen in the Rajo Marga. The Karnini refers to having ears barbed. So when we see an erosion,
we find something like knots or something like a brush-like thing or pericarp of lotus. If you have seen an erosion, we find that it is not plain red in color. It is red in color. It is a marked red in color. But within that red area, we find that there can be barbs that can be seen, or there can be knots that can be seen. Sometimes if there is a polyp, internal polyp, it will look like a trunk of an elephant also. So a tip of an elephant's trunk all refers to muscular structure covered with small sprouts or knots seen in the cervix. This could refer, so there is an understanding that it can also refer to cervical polyps or cervical erosions, but we cannot include it as cervical polyps, because when we see a cervical polyp, the line of treatment first would be either you have to polypectomy, we have to remove it. So there is involvement of surgical, but acharyas always say that for cervical erosion, or if we take Karnini Univapath as cervical erosion, he says that Karnini Univapath is a Sadhya Vyadhi. So since it is a Sadhya Vyadhi, it needs no surgical intervention. So probably it is not to do with cervical polyps, rather it is to do with cervical erosions. Considering the treatment modalities, polyps come under surgical treatment, while Acharyas mentioned that this Karnini Univapath is a Sadhya Vyadhi. Therefore, Karnini should refer to cervical erosions. Substantiating this factor, supported by its other nidanas like Bija Dosha, Mityahara Arthavadushti, as I said earlier, cervical erosion which is seen postnatally as in the purpurium, producing infertility. Maybe there is congestion, maybe there is edema. And because of that, as I told you, sometimes there might be an hypertrophic cervix. So because of that, there is a possibility that the os will be narrowed. There might be thick mucus plug, and this prevents a sperm from entering. So this is also one factor which can lead to infertility. And we all know that the Univapaths, the end result is that infertility can be seen, or garbhamna, that there is no formation of a garbha. Vesation of kapha. Even though we know that all the Univapaths, there is an involvement of Vata. In Karnini Univapath, they have segregated it as Vata, Pitta, and Kapha. Karnini comes under, even though there is involvement of Vata, Kapha, and Rakta, the predominance is of Kapha. So there is excessive mucous discharge and itching that is present, which all shows that these are the lakshanas of Kapha. Due to the association of Rakta and Kapha, it appears red in color. So it is red in color also. See, the area is red in color. That is why it is highlighted, and we come to or when we just do a per speculum examination, we come to know that there is an erosion because it is red in color. And this red color is because of the minute arteries that are there, which can be disturbed. It appears red in color. Bloodstain discharge may also be seen. So, and the treatment that has been told in the form of Shodhanavarti, tampons or douches, it also correlates to the cauterization line of treatment that has been told in modern for cervical erosion. Samprapti Kataka has already explained. Dosha is Vata and Kapha. Dusha is Rasarakta Mamsadhatu. Adhisthana is Garbhashaya Mukha. Srotas is Atavaha Srotas. Srota Dushti is Sangha. Vyadhi Swabhava is Chirakari. Sadhya Sadhyata is Kricha Sadhya. To summarize, it is Kapha Prakopa that is taking place, and along with other doshas that can be seen, it depends upon the discharges that have been seen. So if discharges are Tanu, Pichila, Stena, Avila Tantula, Durgandhi, etc., it indicates that even though there is a Kapha predominance, there are other doshas that are also involved, or there are associated doshas that can also be seen. Differential diagnosis would be Kapha Jayoni Vyapath, Sannipatha Jayoni Vyapath, where in all of this you find that there is vaginal discharges that can be seen. Upaplita Yoni Vyapath, Somaroga, Athyananda, Aticharana, Acharana, where you find that there are discharges of different kinds that can be seen in all these conditions, but they are white in color. General conditions like Yoni Kanda, where there is a protuberance or where there is a mass that can be seen, Yoni Arshas. Pandu, in general conditions like Pandu, Shota, Firanga, Upadamsha, in these conditions also there can be white discharge. See, sometimes we in our clinic, we find a thin girl coming to us saying that there is excessive white discharge. We consider it as plain leukorrhea. We consider it as Dhatukshaya. We consider it as an emaciated condition of the patient, which is leading to the white discharge. We just give her something to supplement or nourish her, and the white discharge disappears. So these symptoms due to vitiated kapha would be Panduvarna, that is pallor in vaginal canal, Pichila Yoni, excessive mucous discharge per vagina, Kandiyukta, sometimes there might be pleuritis vulva. Shitala Yoni means there is wetness and numbness of the vagina. This is why the patient gets a discomfort, a feeling of discomfort, and this is why she comes to a doctor for treatment. Symptoms of vitiation of Vata, along with that associated backache, pain in lower abdomen, and ayasa. Chikitsa Sutra goes as Nidana Parivachana. Usually,
we know that first thing is Nidana Parivachana, whatever Nidana has been told. If we can avoid the Nidana, probably that is one of the main thing that can help in line of treatment. Kafagna medications, because probably it is a pradosha, pradishtava or dosha is kapha, so kafagna medication. Varti prayogas, Yoni Vartis has been told, douche with katukashaya rasas and medicated fumigation. We have dupana also, Yoni dupana, which can help in clearing the slothus. We can, which are the drugs which are kledahara, which are kafagna, those can be used for fumigation, agni karma and kshara karma. So management would be yoni prakshalana. So it is a procedure in which the discharges of yoni is washed out with using the quata prepared out of the respective drugs for doshas. Maybe with negrodadi quata, which is mixed with krita, milk and sugar, or aragudadi kashaya, which is stored in all kapha vikaras, is effective in kaphaja yoni vapat for prakshalana, or drugs with a combination of kasi, satrifala, kankshi, amra, jambu bija, dataki with honey is useful for kaphaja yoni vapat for prakshalana. I have mentioned it as kaphaja yoni vapat, but the line of treatment for karnini is also on the same lines. The action of these drugs which are used have shulagna, sravagna, and daurgandhyara properties. Yoni pichu means packing the vagina with any tampon. Yoni pichu, which is routinely practiced, is tila pichu. So you can go for jatyadi taila pichu, or you can also go for panchavalkala yamaka. That is also available. That pichu can also be given, which is having the properties of healing, pain relief, reduces burning sensation, especially in pitta dosha. Yoni vartis. Vartis, they are prepared, long in size, that can be used effectively in infections and dealing with their, that is, some vartis which are may prepared with powdered yava, masha is used in kaphaja yoni vapat. So the indications are yoni paichilya, kaphaja yoni vapat, viplata yoni vapat, karnini yoni vapat, and anartava. Or yoni purana with drugs like powder of palasha, dataki, jambu, samanga, mocharasa, sarjarasa in equal amount is used as yoni purana. This is also an useful treatment that can be given in vaginal discharges. Kshara karma and agni karma has also been explained. Kshara karma is said to be superior to any other surgical or parasurgical measures due to its functions like chedana, bheda, lekhana, patana karma. So Kshara karma acts as a corrosive or a causative agent, caustic agent, and generates healthy base for healing. Application of Kshara in case of cervical erosion is an effective form of herbal. We use simple drugs that can be used in the form of copper sulfate. This is one thing that can be used in as a Kshara and healing erosions. But we also use certain drugs like Tirfala. We can also use something like Avamara Sharka. All these drugs can be used for as Kshara drug cauterization, which helps in the form. This is a type of cauterization that is being used, a type of drug which helps in the form of a cauterization. This therapy clears the erosion with minimal recurrence and complications. Agni karma, electrocautery is a burning of the diseased tissue by a red-hot electric cautery. The basic principle behind the application of Agni karma is superficial cauterization that can be done without anesthesia as an outdoor procedure. Yoni dupana with drugs like which helps in srodashodhana, or which is something like kafagna, or which is kledahara. Such procedures or such effectiveness can be seen with yoni dupana also. A probable mode of action is Agni karma pacifies vata and kapha dosha, which is as it is ushna, tikshna, and sukshma ashukari guna. The heat transport acts by removing the obstruction in the slothus, increases the blood circulation to the affected area, hence the cellular activity and metabolism in the cellular level increases. In Dagda Vrana, Rakta agitated by fire gets aggravated. Pitta dosha also gets aggravated due to similar properties in Virya and Rasa. Patya and Apatya that has been told for all Yorirogas can also be given for Karnini Yoni Vapat. So in total, it has been told that meals prepared with Yava, Sidhu, Taila, Abhayarishta. Abhayarishta is also stored with Patya in all Yoni Vapats. This can be used in Karnini Yoni Vapat also. Pippili, Lohabasma, and Haritaki all in equal quantity should be taken with honey. Diet which is rich in meat and milk is more beneficial in Karni Yoni Vapat, especially if it is something where you find that it is more of Vata and excessive discharge. Manda is contraindicated to a woman suffering from any of the Yoni Vapats. So to conclude, gynecological problem in women is white discharge, foul smell, itching at vulval region, burning micturition, etc. is seen.
Kandu, Yonisrava, and other features of Kapha-Pitta Dushti are seen in cervical erosion. It is seen as red circular glandular surface surrounding the cervical os based in discharges. On the study of the etiological factors, signs and symptoms, this is found to be caused by Kapha-Pitta Dosha, Prakopa affecting yoni and Garbhashaya Mukha leading to Samprapti, which manifests as cervical erosion. Based on symptomatology, cervical erosion can be correlated with Karnini yoni. But Karnini is an abnormal proliferation of the cervical epithelium, which may produce abnormal discharge, alter the vaginal pH, and cervical mucus plug. Chikits of Karnini yoni Vyapaths is yoni prakshalana, yoni pichudharana, yoni dhupana, yoni varti, yoni dharana, yoni dhupana, varti dharana, agni karma, kshara karma, and Kapahara line of treatment should be done. Diet should also play an important role in cervical erosion. So you have to take in more of Kapahara line of treatment, Kapahara line of or Kafagna line of diet, and Patyana Patya, which is I already mentioned, are to be followed. Thank you. Thank you everybody for listening to me. And I also thank Kamini Madam for giving me an opportunity to speak in this. Thank you. Thank you very much, madam. Nicely explained. And this platform belongs to you. So consider this platform as yours. All of you, I am requesting all of you. This platform is yours. Sudhaji, your comments. Thank you so much, ma'am. Very nicely you have presented the topic. You have covered both Ayurvedic and the modern aspect and the treatment modalities in both Ayurveda and modern aspect. Congratulations, ma'am, for your nice presentations. Now this topic is open for discussion. We can go for the queries. Before that, I wanted to add some points on this topic. No doubt, cervical erosion is very small topic, but it is having a great role or importance in manifesting much gynecological disorders, starting from the abnormal vaginal discharge up to the infertility. That I have already told this. First thing is how to approach such type of patient. So whenever a person coming to us, first of all, we should ask or generally cervical erosion patient usually present with the abnormal vaginal discharge. And that is the primary thing we can diagnose. We can diagnose the cervical erosion. Commonly, abnormal vaginal discharge, if associated with pain, or if there is when we will go for the PS and PB examination when there is CMT is positive, then we our provisional diagnosis is cervical erosion. But abnormal vaginal discharge may be associated with the erosion or may not be associated with the erosion. So we have to differentiate these both conditions before giving any sorts of medicines. So coming to the treatment modalities, actually in cervical erosion part or any lesion in cervix or vagina like vulvovaginitis, the best treatment modalities is our Sthanik Chikitsa local therapies, whichever described in our text. But usually both oral and Sthanik Chikitsa, both are having a great role in curing this condition. So as we know that some acharya has told this is Vata Kafach Vyadhi, and another acharya has told this is Pit Kafach Vyadhi. So generally, practically, we see cervical erosion is Tridosas Vyadhi in dominant with Pit and Kaf. So whenever a patient is coming to us, first we have to diagnose which dose is predominantly there. And depend upon the dosic manifestation, our treatment will be there. So in my practice, generally, first I see the dosic involvement, and according to that, I give the treatment to the patient. If cervical erosion is associated, much more associated with redness, and the follicles are more, the erosion is in severe conditions. And again, during PV examination, if we find the temperature is more, then in that case, we generally guess the Pitta dominant case. And where Pitta is there, our drug of choice should be like Pitta Samak, like Yash Madhu Tel, Yoni Pichu, and Panchaval Kaladi Kashaya, Yoni Dhavan. And
and Jatyadhi tel also we can go for that. And in another condition, cervical erosion is if associated with mucoid discharge, then pichil srav will be there. If kandu is associated there, then kafasamak aushadhi like dhatakyadi tel, then kasisadi tel, pipalyadi varti, we can go for that. Again, Bruhati Haridradi Dhupan, as already described or told by Dr. Anita, and her research topic was also on that. And she has she had made this Dhupan Jantra very nicely and during her PG studies, and both Bruhati and Haridra combinations churna she had used for curing this vulvovaginitis and cervical erosion. So in Kaphaj Vyadhi, we can go for this Dhupan by Bruhati and Haridra. If the cervical erosion is associated with pain and where CMT is positive, cervical motion tenderness is positive, we can go for Guduchadi tel Yoni Pichu and Dasmul tel Yoni Pichu. Again, in oral conditions, mainly where inflammation is there, cervical erosion is just sort of inflammation. So where inflammation is there, कहीं ना कहीं पित्त का predominant हो रहा है, तो our medicine should a prescription should be comprises of pitta samak aushadhi. Generally in hand we have abhipatti karchun. अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो कम से कम अभिपत्ति karchun we can go for that. एंड सर्वाइकल इरोजन अगर ट्रीट कर रहे हैं तो उस टाइम में हमें ये भी ध्यान देना है कि एक लैक्सेटिव जरूर देना ही है, क्योंकि सर्वाइकल इरोजन एबनॉर्मल वाजाइनल डिस्चार्ज ये कॉमनली फाउंड इन सर्वाइकल सॉरी पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम में भी ये मिलता है। तो लैक्सेटिव देने से जो एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है वो भी क्योर होता है। तो पित्त का सामन भी होना है, देन लैक्सेटिव भी देना है, तो दोनों को कंबाइन करके हम अभिपत्ति कर्चुन दे सकते हैं। And according to symptoms, we can also go for Panchatikta Ghruta Google tablet. For Kafach symptoms is more, we can go for Panchatikta Ghruta Google. So these are my clinical practice experiences I have shared with you. So now this topic is open for discussion. So you can put your queries or also any views or in your clinical practices. Before you have open session, experienced. before Yes, sir. open session, we have our great expert, Professor Rambir Sharma. So I would like to invite Professor Rambir Sharma ji for his comment, and then session will be open for 20-25 minutes. भाई जी प्रणाम। हरिओम जी हरिओम। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अनम्यूट है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। हरिओम। आप जुड़ जाइए शांति से, तब तक हम सेशन ओपन करते हैं। अग्निहोत्री साहब। थैंक यू प्रोफेसर पवन शर्मा जी। अभी आज के इस वेबिनार टॉपिक पर हमारे दो गेस्ट स्पीकर्स अपनी बात रखी, डॉक्टर अनीता और डॉक्टर ने। अभी सेशन में बहुत सारी चीजें आ गई, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा दोनों का। और मुझे तो स्पेशली अनीता जी के लिए कहना होगा कि वो उन्होंने जहाँ एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात रखी, साथ के साथ उन्होंने जो ट्रीटमेंट पार्ट दिया वो स्पेशली अपने पेशेंट्स पर बेस करके दिया, तो ज्यादा ही वाइटल लगा मुझे। और चीजें आयुर्वेद से इतनी अच्छी मैनेज हो सकती हैं, ये एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। केवल हम अपना जो वर्क करते हैं तो नेचुरली उसको हाईलाइट करना भी उतना ही जरूरी है। दोनों ही एमडी पीएचडी हैं, तो नेचुरली उनके पास एक्सपेरिमेंट और रिसर्च का बहुत बड़ा लंबा स्टोर है, स्टॉक है और
एक्सपीरियंस है। तो ये सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा। हम सबका, इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इस भी हमारे प्रोफेसर रामवीर शर्मा साहब पुनः आ गए, हम समझते शायद उनकी आवाज भी अब हमें सुनाई पड़ जाएगी। सर अभी आवाज नहीं आ रही है, तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 20, 22, 25 लोग जुड़े हैं, उनको यदि कुछ भी कहना है, अपना ऐड ऑन करना है, तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। और अगर उनको कोई क्वेरी भी है, कोई उनको जानकारी लेनी है इस ट्रीटमेंट के तहत, कोई उनको और डीप से जाना है, तो हमारे दोनों ही गेस्ट स्पीकर्स हमारे साथ हैं, वो आपका उत्तर कुछ न कुछ उसको आपको सुझाव देंगे, रास्ता बताएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके उनमें कोई बात आ रही है तो हैंड रेज कर ले, तो उनको बाय नेम इनवाइट कर सकेंगे। और उनके पास कोई चीज एड ऑन करना है, वो वेरी गुड, आई विल लाइक टू। अगर प्रोफेसर रामवीर शर्मा साहब कंफर्टेबल हैं, अपनी बात रख सकते हैं, तो हाँ, तो उनका स्वागत है। बार बार आवाज चली जाती है। इस बीच डॉक्टर पवन जी कुछ कोई क्वेश्चन या कोई बात कहना चाहते हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है। स्वागत है डॉक्टर पवन जी। प्रणाम अपनी सर, बात चरण स्पर्श। जी, पसंद सभी रहिए। वैद्यों को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, क्लियर आ रही है। चरण स्पर्श सर, सभी को मेरा नमस्कार। चरण स्पर्श, सादर वंदन। सर सेशन दोनों ही बहुत अच्छे थे। लास्ट वाला तो कुछ नेटवर्क की वजह से मैं सुन नहीं पाया। अनीता मैम से मेरा एक 2-3 क्वेश्चन है दोनों मैम से। एक तो कुश्तादी चूर्ण का रेफरेंस कहाँ मिलेगा वो बताएं। हाँ। और अग्नि कर्म के लिए कौन सी सलाह का बेस्ट है और उसके पूर्व कर्म क्या होने चाहिए, क्योंकि हम मेल डॉक्टर को भी पता होना चाहिए। हम गायनी की इतनी प्रैक्टिस नहीं करते ताकि मोर नॉलेज हमें। और ये सर्वाइकल इरोजन को कैंसर में ट्रेंड होता है, उसके जो पहले सिम्टम्स हमें पूर्व रूप देखने को मिलते हैं वो क्या क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। चलिए, वन बाई वन आपके क्वेश्चन टेकअप होंगे। कुष्ठादी चूर्ण का रेफरेंस आपने चैट बॉक्स में भी डाला था, और इसके अलावा आपने जो पॉइंट रखे हैं अभी अग्निकर्म के लिए, डॉक्टर अनीता जी से आपका प्रश्न है। चलिए, कोई डॉक्टर विद्या जी या कोई भी डॉक्टर मैम, अनीता जी दोनों जो में भी से बताना दोनों चाहे, से ही है, जो कोई भी भी जो बताना चाहे। कंफर्टेबल है। जी, स्वागत है उनका। Sir, myself, Dr. Vidya. For Agni Karma, we do not actually have much scope. We do not do much here. But we try with copper sulfate, plain copper sulfate we try. And we also try, the only method we do is either we go for Shara Karma, Sapamarga Shara, and we apply. Agni Karma, I do not have much experience, sir. We have not applied anything with like Agni Karma. मैम कॉपर सल्फेट अगर एक बार अप्लाई किया तो क्या डेली ही करना पड़ता है, कितना? या we keep it for a few minutes and then remove it off, and then we keep any oil there. Maybe Jatyati Taila or anything like that, we keep it there. कितना सीटिंग लेना पड़ता है मैम? डेली अप्लाई कर सकते हैं? डेली पेशेंट को कितने दिन बुलाना पड़ेगा? हम usually whatever treatment we do it for 3, 5 or 7 days. रेगुलर मैम? Yeah, every day. ओके ओके, नाइस, थैंक यू। One thing I wanted to add in this topic, in your query, you have asked about the salaka, na? So actually, cervix is very delicate. Again, whenever you are going to approach cervix, you have to pass through the vaginal wall also. So according to me, it is not safe to use salaka in cervix. Instead of that, you can go for the dagdhadi varti. Means first you have to prepare the varti, any type of varti according to dosic involvement you can prepare. Then you have to burn the tip of that varti. Okay, and tip of the barti again you have to catch it through the sponge holding forceps, फिर उसको दग्ध करना है, and उसको stroke manner में, जैसे हम लोग क्रायो सर्जरी में करते हैं, या फिर जैसे कोई भी बर्न को हम स्ट्रोकिंग मैनर में 1 by 1 इन ए सर्कुलर मैनर और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी यू हैव टू गिव ए स्ट्रोक. ओके, एंड अल्टरनेटली अगर कोई भी जैसे क्षार भी दे रहे हैं या अग्नि कर्म कर रहे हैं, अल्टरनेटिवली यू हैव टू डू continuously. You should not go for that. Alternatively, you can go for that. And Dagdhadi Varti is having very good result in cervical erosion. You can try. मैम उसमें सम्यक दग्ध के क्या लक्षण हो गए? उसमें कपोत वर्ण जैसा ही करना पड़ेगा हम जैसे आम वर्ण पे हम करते हैं? नहीं, देखिए उसमें क्या होता है, पहले अगर सलाका तो छोड़िए, दगदादी वर्ती अगर यूज कर रहे हैं या क्षार भी यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट साइन ये होगा कि उसमें ब्लीडिंग आएंगे, उजिंग आएंगे.
तो दैट इज ए गुड साइन कि उसमें यूजिंग हो रहा है, मतलब आपका जो ड्रग्स आप दे रहे हैं वो वर्क कर रहा है, मतलब वो जो कलिमनर एपिथेलियम है जो डेब्रिस है उसको बर्न कर रहा है और उसमें री एपिथेलाइजेशन होने का चांसेस है। तो कपोत वर्ण ज्यादातर दग्धादिवर्ती में नहीं मिलता, वो जैसे कपर सल्फेट में है या क्षार में है वो मिलता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है बाद में, वो सेकेंडरी फेज में। इनिशियली यूजिंग होगा, बाद में वो कपर सल्फेट का वो जो ब्लूइश डिस्कलरेशन वो आएगा। मैम इसका कितना सीटिंग लेना पड़ेगा फिर? मैक्सिमम 7 days, अल्टरनेटिवली यू कैन गो फॉर। ओके मैम, थैंक्स। और मैम जो अक्षार हम लगाते हैं तो अक्षार का क्या पोटेंसी रहना चाहिए? मृदुल लगाते हैं उसमें तीक्ष्ण अक्षार कौन सा लगाएंगे? नहीं, तीक्ष्ण तो वैसे अगर तीक्ष्ण नहीं लगा के आप दग्धादिवर्ती पे जा सकते हैं, और माइल्ड टू मॉडरेट केस में अपामार्ग क्षारिज सेव वो आप वो यूज कर सकते हैं। यवक्षार भी है, हाँ, जब क्षार भी हम यूज कर सकते हैं। यवक्षार भी यूज करते हैं। और अगर हाँ सिवियरिटी है, सर्वाइकल इरोजन ट्रिपल+ है, तो उसमें हम दग्धादिवर्ती यूज करते हैं। अक्षार का वही रहेगा मैम, जैसे लगाया फिर उसको अम्ल पदार्थ से फिर उसको वॉश आउट करना है 100 अम्ल तक, पदार्थ 1 या 2 देखिए, मिनट के बाद। अम्ल पदार्थ तो मैं तो यूज नहीं करती, या फिर मैं देखी नहीं कि कहीं अम्ल पदार्थ यूज करते हैं। बेटर टू गो फॉर त्रिफला कषाय, मतलब पहले आप क्षार अप्लाई कीजिए, फिर उसके बाद त्रिफला कषाय से आप उसको योनि धावन कीजिए, या पंचवल्कलादि कषाय भी ले सकते हैं। इट इज वेरी गुड एंड इफेक्टिव ऑल्सो। ओके मैम, ओके, मतलब वो नाइस। क्षार पार्टिकल सर्वाइकल एरिया पे नहीं रहना चाहिए, या वैजाइनल वॉल पे भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये तीक्ष्ण है, वहां भी इरोजन होने का चांसेस है। तो प्रॉपरली यू हैव टू वॉश इट आउट। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो ल्यूकोम वाटर में भी आप वॉश कर सकते हैं। जैसे मैं पॉलिप्स में लगाते हैं ना, नेजल पॉलिप्स में मैं अक्षार लगाता हूँ, उसमें क्या जी। करता हूँ 1 मिनट लगाने के बाद है ना, और उसको जस्ट नींबू सवरस से उसको वॉश कर देता हूँ, और बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। वो 2-3 सीटिंग में ही चला जाता है। मैंने काफी सारे पेशेंट्स पे ऐसा किया। हो सकता अच्छा, है ये भी। हाँ, नहीं एक्चुअली मेरे पास देखिए, वीडियोज भी है उसकी। हाँ, नहीं वो तो सही है। पॉलिप और सर्वाइकल इरोजन बोथ आर सेपरेट थिंग। अगर हम सर्वाइकल इरोजन में क्षार दें तो आप एक कषाय और स्तंभन औषधि दीजिए इंस्टेड ऑफ अम्ल। Sudha madam, can we go for Krita Prayoga? Krita Prayoga is also good, no? आफ्टर After application of Shara, क्षार, after Shara. नो, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ क्षार यू हैव टू वॉश इट आउट। वो क्षार पार्टिकल अंदर नहीं रहना चाहिए। फिर उसके बाद आप पीछू दे सकते हैं। कंबाइनली 3 प्रोसीजर हो जाएगा। एक तो क्षार एप्लीकेशन देंगे, फिर धावन करेंगे, फिर पीछू देंगे, तो अच्छा ही रहेगा रिजल्ट। तो मैम इमीडिएटली पिचू देंगे या ऑल्टरनेट डेज पर देंगे कि लेके जैसे? इमीडिएटली उसी सेशन में पहले आप क्षार अप्लाई कर दीजिए, फिर धावन कर दीजिए, फिर उसके बाद पीछू देके पेशेंट को हम भेज सकते हैं। एंड मैम जो पिचू आपने बताया ना, जात्यादि मधु एसटी एंड काशी शादी अनीता मैम ने बोला, तो वो ऑल्टरनेटली यूज करना है, जैसे पहले काशी शादी यूज किया, फिर मधु एसटी, फिर जात्यादि, या उसकी इरोजन को देखते हुए उसको देखेंगे और काशी शादी के बाद ही तुरंत ही मधु एसटी का पिचू धारण कराएंगे? नहीं ऐसे नहीं। आप वहां देखिए कि Single दोषी oil. की इन्वॉल्वमेंट क्या है। मेरे ख्याल से वहां दोषी की इन्वॉल्वमेंट क्या है वो देखिए। काशी शादी हम मेनली कफज डोमिनेंट में देते हैं, और मधु एष्टादि पित्तज डोमिनेंट में देते हैं। धातक्यादि भी कफज में देते हैं। अगर वहां पेन तो है, मैम यूनिस काशी शादी ज्यादा, पिचू कितने दिन तक धारण कराना है? कितनी, वही 357 का ही रखेंगे? 7 days, मिनिमम 7 days। और उसके और बाद पोस्ट? सिवियरिटी, अगर सिवियरिटी ज्यादा है तो अप टू 10 days भी दे सकते हैं। और जैसे वहां धारण काल बताया है, टेक्सचुअल रेफरेंस है आमूत्र कालात अप टू द अर्ज ऑफ यूरिनेशन। तो पहले बिफोर गोइंग फॉर योनि पीचू यू हैव टू आस्क टू वॉइड द यूरिन फर्स्ट टू द पेशेंट, देन अप्लाई योनि पीचू एंड अप टू आमूत्र काला। तो मिनिमम 45 इट विल मिनट टेक, नहीं मिनिमम इट विल टेक 2 to 3 hours। 2 to 3 hours have to retain। पोस्ट? मेरी आवाज आ रही है? मैम यस दूसरी सर। चीज ये कि काशी शादी ऑयल तो हम लोगों को आराम से मिलता है, बट जो जेल है काशी शादी जेल, तो वो अच्छा, क्या एक्चुअली बनाते हैं काशी वैद्य? शादी, नहीं काशी शादी जेल मेरा ही टॉपिक था, रिसर्च टॉपिक था।
पोस्ट ओके ग्रेजुएशन का। तो हमारे जो टेक्सचुअल रेफरेंस है वो काशीसादी वर्ती है। हाँ, काशीसादी वर्ती चरक चिकित्सा स्थान योनि व्यापद अध्याय में है। वो कफच योनि व्यापद में अप्लाई करने का वो रेफरेंस है। तो हमने ये सोचा था कि काशीसादी वर्ती इजीली, मतलब वो वर्ती बनाने के लिए सुपरविजन बहुत जरूरी होता है। उसमें थोड़ा सा हमें पहले बनाना होता है, फिर पेशेंट को अप्लाई करना होता है। तो मेरा ख्याल ये था, और मैम जो मेरे गाइड थे सुजाता मैम, उनका भी ये था कि इन हैंड अगर पेशेंट को मिल जाता है वर्ती फॉर्म में, जैसे वी जेल होता है, तो ऐसे ही अगर जेल कोई मिल जाता है तो फिर वो इजी होगा पेशेंट के लिए। तो यही सोच के हमने वही काशीसादी जेल बनाया था। मैं थोड़ा सा मैम इसमें अभी क्या थैंक अवेलेबल यू है क्या? डॉक्टर सुधा, थैंक यू। हमारे साथ प्रोफेसर रामवीर शर्मा साहब जुड़ गए हैं, कंफर्टेबल हो गए हैं। मैं डॉक्टर सुधा का, डॉक्टर पवन का और सबका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने चर्चा में अपनी बात रखी। एक शायद अभी डॉक्टर पवन का रह गया है पेशेंट की उस्तादी चूर्ण, डॉक्टर अनीता ने मेंशन किया था, उसका शायद उन्होंने इंग्रेडिएंट या कोई रेफरेंस पूछा है, वो बाद में चैट बॉक्स में डाल दें। मैं इस बीच आदरणीय प्रोफेसर रामवीर शर्मा साहब को सादर आमंत्रित करता हूँ, और विषय के विशेषज्ञ हैं, आप अपने मार्गदर्शन देने की कृपा करिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। बहुत अच्छी चर्चा रही। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। 1986 में मेरी सेकंड जो थीसिस थी वो सर्वाइकल एरोजन पे ही थी। उससे पहले कोई सर्वाइकल एरोजन पे कोई थीसिस नहीं थी। उसमें मैंने कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द कॉट्राइजेशन बिटवीन मेडिसिन ये रखा था 1986 में। और उस समय कॉट्राइजेशन वगैरह की ये कॉटरी वगैरह मशीन भी नहीं थी, तो कॉटरी मशीन में स्वयं में ही खरीदा था। इसको बहुत सारा बोलने के लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस है। उसके बाद में क्रायो सर्जरी भी मैंने की इसके ऊपर, क्रायो सर्जरी के साथ में कॉट्राइजेशन भी किया, उसका भी कंपैरेटिवली किया। अभी मैंने जो बात की, हम लोगों ने सिर्फ पैथोलॉजी मैडम ने बताई, उन चीज़ों को थोड़ा सा मैं डिफर करता हूँ। हम लोग बहुत सारे लोगों से करते रहते हैं, हम लोग उसको करते भी रहते हैं और उसको हम फॉलो भी करते हैं कि यहाँ पर अपने कर्णिका योनि के ऊपर ही ज्यादातर बात की जा रही है। कर्णिका योनि के लिए उन्होंने कहा है कर्णिका मांस कंदो। तो कर्णिका योनि के अंदर मांस कंद के समान एक रचना पैदा होती है, अकाले बाहमानाया गर्भेण पेटो नील, उन पेशेंट्स के अंदर जो एक्सेसिव अपने वियर डाउन करते हैं विदाउट पेन। अब उसमें क्या सर्वाइकल इरोजन में कंदिकाकार क्या पैदा होती है, उसमें कोई एक रचना, क्योंकि सर्वाइकल इरोजन 3 तरह का सर्वाइकल इरोजन है। फ्लैट सर्वाइकल इरोजन है, पेपिलरी सर्वाइकल इरोजन है, और उसके बाद में अपने आता है एक वास्कुलर। पेपिलरी के अंदर फ्लैट भी आता है तो पेपिलरी वास्कुलर में आ जाता है। तो वास्कुलर इरोजन के अंदर वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ में अपने कॉन्टेक्ट ब्लीडिंग भी रहती है। तो इसमें क्या कर्णिका बनती है? हाँ, कर्णिका कहाँ बनती है? जब नेवोथियन सिस्ट बनती है, जब ओवरलैपिंग ऑफ द कॉलमर एपिथेलियम के ऊपर कॉलमनल एपिथेलियम नीचे आ जाती है और अपने स्क्वैमस एपिथेलियम ऊपर आ जाती है। तो कॉलमनल एपिथेलियम के जो नेवोथियन सिस्ट होती हैं, नेवोथियन जो ग्लैंड्स होती है, उनकी सिस्ट बन जाती है, तब जाके वो कर्णिका के रूप में बनती है, कंद के आकार में बनती है, तब मार्गार होता है। क्योंकि उसकी सिस्ट की जो साइज होती है कुछ mm से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक की हो जाती है, जब उसको पंचर करके निकालना पड़ता है। तो कुल मिला के कर्णिनी योनि ही सर्वाइकल इरोजन नहीं है। सर्वाइकल इरोजन के अलग अलग स्टेजेस हैं। जो फिजियोलॉजिकल सर्वाइकल इरोजन है, जैसे अपने कंजेनिटल होता है, बता रहे थे, कंजेनिटल यानी न्यूनेट के अंदर होता है, एडोलसेंट पीरियड के अंदर होता है, प्रेगनेंसी के अंदर होता है, अपने उसके बाद में परपुरल पीरियड के अंदर होता है। ये सारे के सारे फिजियोलॉजिकल होते हैं, अपने आप ठीक होते हैं। दूसरे पैथोलॉजिकल होते हैं। तो पैथोलॉजिकल निश्चित ही जहाँ पर अपने कॉलमनल एपिथेलियम जंक्शन है, यहाँ पे ट्राइजिस्टल जोन है, वहां पे अगर कोई किसी तरह का हाइपरप्लेजिया होता है, तो डॉक्टर साहब ने अभी जस्ट बात की थी, अगर क्रॉनिक सर्विसाइटिस की वजह से हो रहा है, पैथोलॉजिकल हो रहा है, कई दिनों तक चल रहा है, तो निश्चित ही इसके अंदर हाइपरप्लेजिया होने के बाद मेटाप्लेजिया होता है। और मेटाप्लेजिया के लिए अपने डायग्नोसिस के लिए पहले पेप स्मेयर करते हैं, पेप स्मेयर के बाद में फिर अपने बायोप्सी भी करते हैं, कोल्पोस्कोपी करते हैं, इसको डिस्टिंग्विश करने की। कि कोई भी क्रॉनिक इन्फेक्शन रहेगा तो निश्चित ही आगे चल के उसके अंदर मैलिग्नेंसी में परिवर्तित हो सकता है, होगा ही ऐसा नहीं हो सकता। तो इसमें बहुत सारी, अब बात आई क्या, कॉलमनल एपिथेलियम को वहां से डिन्यूट करना है। अब डिन्यूट करने के लिए सबसे बड़ी अपने पास में क्या है, अर्क बचती है, शोधन बढ़ती है, अर्क बढ़ती है। अभी जस्ट बात की थी कॉट्राइजेशन, अग्निकर्म सबसे बढ़िया है, क्षार कर्म सबसे बढ़िया। अभी बात कर रहे हैं ना, क्षार कर्म के अंदर क्या करेंगे, जाम्बू कलर का जो दर्द होगा वो होगा स्किन के अंदर, वहाँ स्किन नहीं है, वहाँ इसका मतलब एपिथेलियम है।
तो वहाँ कॉलमनर एपिथेलियम है, तो वहाँ पे कलर उस तरह का नहीं होगा, वहाँ पे व्हाइटिश होता है। व्हाइटिश वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बंद होने की वजह से वहाँ तो व्हाइटिश जो प्रोटीन जो है वो जली हुई पेट्रोल मिलेगी। तो उसके अंदर भी एक और बात आई थी, वहाँ पे थोड़ा सा गलत था, मैं उसको बता दूं। अपने जब क्रायोसर्जरी करते हैं स्टॉक नहीं देते, स्टॉक किस में करते हैं, स्टॉक करते हैं कॉटराइजेशन के अंदर, अग्निकर्म के अंदर। क्रायोसर्जरी करते हैं तो वहाँ पे प्रॉप को लगा के रखते हैं, और लगाने के बाद में उसको कुछ सेकंड के अंदर जब 1 सेंटीमीटर का जो बाउल बन जाता है, उसका क्या नाम है, आइस का, उसको बंद कर देते हैं, फिर उसको आइस को पिघलने देते हैं, उसके बाद उसको पिघल जाती है, उसके बाद में अपनी प्रॉप को हटाते हैं, तो उसमें स्टॉक नहीं देते। अब यहाँ पे सिद्धांत क्या है, सिद्धांत ये है कि श्लेष्मा है, श्लेष्मा का हटाना है, और वहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियम है, उसको डिन्यूट करना है। तो निश्चित ही जो काशीस आदि है, काशीस आदि तेल है, अपने जात्यादि तेल है, जिसमें भी काशीस है, वो काशीस क्या करता है, लेखन का काम करता है। अब लेखन कब तक करना है, लेखन तब तक करना है जब तक कॉलमनर एपिथेलियम वहाँ पे से हटे नहीं। जब हीलिंग प्रोसेस आ जाए तो वहाँ पर रोपण चिकित्सा करनी है, तो वहाँ पर अपने एस्टी मधु तेल का प्रयोग करेंगे, एस्टी मधु घृत का प्रयोग करेंगे। तो अभी मैडम ने पूछा था कब तक करना है, तो इसका ये है कि जब तक डिन्यूशन करना है सेल्स का, कौन से कॉलमनर एपिथेलियम के सेल्स का, उनको हटा के फिर अपने स्क्वैमस एपिथेलियम के लिए उसको छोड़ देना है। तो कॉलमनर एपिथेलियम को जब तक हटाएं तब तक उसके अंदर चाहे क्षार करें, चाहे उसके अंदर अग्निकर्म करें, चाहे अपने लेखन कर्म करने वाली जो मेडिसिन है उनका प्रयोग करें, जैसे क्षार का प्रयोग करते हैं, कंकड़ का भी प्रयोग करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का भी प्रयोग करते हैं। उनको डेडिशन हो जाएगा सेल्स का, उसके बाद में रिपैथोलाइजेशन के लिए यहाँ पर व्रण रोपण की चिकित्सा करने वाली अपने, मैंने एक क्लस्टर ऑल बनाया था, मैडम ने भी बताया ना जेल, तो उस समय 1986 में हमने बनाया था एक ऑइंटमेंट क्लस्टरॉल। और क्लस्टरॉल में क्या था, उसमें थे पंचवलकल के साथ में चंदन, इनका एक्सट्रैक्ट निकाला था। और एक्सट्रैक्ट उस समय बहुत कम जगह निकलता है, इंदौर से निकाल के ले गए थे जामनगर, और उसमें जो अपने उदुम्बराज तेल है उसका अपने बेस लिया था ऑइंटमेंट, उसका बनाया था, तो उसका अपने रिजल्ट मिला। क्यों रिजल्ट मिला था, क्योंकि जब अपने डिल्यूशन कर दिया कॉटराइजेशन के बाद में, फिर उसको हीलिंग करना है, तो व्रण रोपण चिकित्सा करने के लिए उनका प्रयोग किया गया था, अच्छा रिजल्ट मिला। इसके ऊपर अपने बहुत सारी डिस्कस किया जा सकता है, मैंने काम किया है, अभी तक कर रहा हूँ, और क्षार का भी प्रयोग किया है, कॉटराइजेशन का भगवान की कृपा से मैं पाइल्स में भी काम करता हूँ, इसलिए क्रायो सर्जरी भी खूब की है, तो इसके अंदर कॉटराइजेशन के साथ साथ में क्रायो सर्जरी, तो अच्छा टॉपिक है। और निश्चित ही छोटा टॉपिक नहीं है, मैम ने बताया छोटा टॉपिक, हाँ निश्चित ही छोटा टॉपिक है। इसके अंदर कोई सिम्टम नहीं मिलता, कब तक नहीं मिलता, जब तक कि वो फिजियोलॉजिकल रहेगा तब तक, हार्मोनल रहेगा तब तक। उसके बाद जब इन्फेक्शन हो गया तो पित्त भी आ गया, वहां बात आ गई, पित्त की बात आ गई, तो वो भी हो सकता है। और क्रोनिक बना रहेगा तो निश्चित ही इसके अंदर मेटाप्लेजिया हो सकता है। हम लोग ने जब संसाधन कम थे तो हम लोग उसको एक्सक्लूड करने के लिए कार्सिनोजेनिक सेल्स तो नहीं है, तो चिलर्स टेस्ट करते थे, और चिलर्स टेस्ट भी उसमें आयोडीन के द्वारा बनाया जाता था। हम लोगों ने उसको चिलर टेस्ट के लिए चिलर्स आयोडीन सॉल्यूशन बनाया था। इतनी सारी चीजें हम लोगों को उस समय करनी पड़ती थी अपने हाथ से। आज समय में तो बहुत सारी चीजें मिल गई हैं कंप्लीट होने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार आपका। ये होती है कि नॉलेज और नॉलेज की गहराई, और लकीली आपका ये सब्जेक्ट ही मिल गया, आपकी थीसिस मिली इस पर, सर्वाइकल इरोजन पर। वेरी नेचुरली वी ऑल ब्लेस्ड by your knowledge, and your sharing itself made the rather completion or concluding remarks in the same subject topic. Of course, queries are much more there. और अपनी कोई बात रखना चाहे तो स्वागत है। हमारे मंच से जुड़े हुए जितने भी हमारे आज के अभी दर्शक और श्रोता हैं, सभी आयुर्वेद के अनुरागी हैं, तो आयुर्वेद में अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए बहुत ही उनको क्यूरियस हो रहे हैं। जिनका किसी का और भी अनुभव हो इस क्षेत्र में, औषधि चिकित्सा के द्वारा या फिर दग्धादि वर्ती के अनुसार या कोई और कर्म के द्वारा, योनि प्रचालन, धूपन इत्यादि द्वारा, तो निश्चित रूप से वो शेयर करें, तो और सभी लोग को जानकारी मिलेगी, इनके व्यक्तिगत अपने अनुभव हो। डॉक्टर वंदना पाठक जी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, मेरी क्वेरीज थी, और अभी मैडम लोग ने और रामवी सर ने कर दिया। वो एक्चुअली ज्वेल का था कि अगर ये इजीली अवेलेबल हो मार्केट में तो अच्छा रहता हम लोग के लिए। बनाना पड़ता है, बता रहे जी 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 जी। और वो अभी एक शायद वो कुष्ठादि चूर्ण का शायद कुछ रह गया, अगर हाँ जी, डॉक्टर अनीता चूर्णन के बताना बारे में पवन सर पूछ रहे थे। डॉक्टर अनीता अगर बताना चाहे, उन्होंने मेंशन किया था शुरू में ही, कुष्ठादि चूर्ण, अपामार और धात्रादि, बहुत सारी तेल पिछू वगैरह बताए थे काशी साहब के साथ में। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं जी। हाँ, सर इसका का रेफरेंस योनि व्यापक चिकित्सा अध्याय में है। हाँ, चरक चिकित्सा। चरक चिकित्सा 30।
30 उन्होंने चैप्टर में शायद इंग्रेडिएंट भी मांगे, तो वहां से ही मिल जाएंगे। यस हाँ सर सर, सर, अवेलेबल है सर। उसमें एक सर कुष्ठ, पिपली, अर्क और सैंधव है सर। बस एक वेरी गुड। एक कुष्ठ, ओरल पिपली, अर्क और सैंधव। एक ओरल डॉक्टर मेडिसिन पवन, एक डॉक्टर ओरल पवन नोट कर सकते हैं जी, ओरल यूज के लिए। हाँ हाँ, ओरल यूज के लिए मैंने बनाया जी था मैम, थैंक्स, टैबलेट। मैं देख लूंगा। उस कुष्ठ टैबलेट कुष्ठादि चूर्ण जो है ना। नहीं, जो टैबलेट मैंने यूज की थी सर, उसमें जी जी, अभी मैडम ने बात की थी अच्छा, कि इन्हीं इंग्रेडिएंट को डाल के। हाँ नहीं, अलग से ओरल मेडिसिन के लिए हाँ ओरल ओरल मेडिसिन में। का भी था, ओरल मेडिसिन का भी कंपैरेटिव स्टडी थी इसलिए। तो मैम ने जो बात की थी अभी जस्ट कुछ देर पहले कि इसके अंदर जो मेडिसिन है वो किस तरह से प्रयोग करते हैं, तो बात अपने श्लेष्मा योनि के लिए भी चिकित्सा की गई, क्योंकि उसके श्लेष्मा योनि से भी बहुत सारे सिम्टम्स मिलते हैं। तो उसमें आम्ल एक तो थी अशोक, आम्ल की, धा धात्री, कुकुटांतर रस और प्रदांतक रस, प्रदांतक रस और आदागु, लोनासर, लोद्र, नागकेसर और यष्टि मधु और रसांजन। आपने फार्मूला बनाया हुआ है। बनाया था आदागु, लोनासर। एब्रीविएशन। तो ये मेरे मेडिसिन का इसका नाम था PTR 86, क्योंकि 86 में इसको प्रोड्यूस किया गया था। तो प्रधान तक लौह से लेके इसको अपने एक फॉर्मूला बनाया था, जो ओरल मेडिसिन दी गई। ओरल, लोकल और कॉटराइजेशन, इनका अपने कंपेरेटिवली स्टडी की गई थी। कॉटराइजेशन के बारे में दो बार अपने सिटिंग करनी पड़ी थी, कई पेशेंट में दो बार सिटिंग करनी पड़ी थी। और उसमें हीलिंग के बाद जब जो डिल्यूशन होता है एरिया में, वाइट डिस्चार्ज और बढ़ जाता है, और डिस्चार्ज बढ़ जाता है। एक पेशेंट तो ऐसा था, 32 पेशेंट में एक ऐसा पेशेंट था जो PID में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि उसकी तरह पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं वाइट डिस्चार्ज बढ़ने से। तो ऐसे अपने हजारियस सिम्टम्स भी मिले थे, जिनको हमने अपने थीसिस के अंदर उसको मेंशन किया। तो इस तरह से ओरल मेडिसिन भी काम करती है। ओरल मेडिसिन कौन सी काम करेगी, वहां पे शतावरी नहीं देनी है। ईस्ट्रोजेनिक, फाइटो ईस्ट्रोजन जिसके अंदर उनको नहीं बढ़ाना है, क्योंकि ईस्ट्रोजेनिक कंडीशन, हाइपर ईस्ट्रोजेनिक कंडीशन इसके अंदर कोलमनरी एपिथेलियम को बढ़ाती है। तो जो जिसके अंदर औषधियां जो ईस्ट्रोजन के कम करती हैं, मोस्टली कषाय औषधियां जो कफ को कम करती हैं, पित्त को भी कम करती हैं, उनका प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से इनका ओरल मेडिसिन भी प्रयोग किया जा सकता है। जो निश्चित ही इसमें रक्त, क्लियर आचार्य कह रहा है, रक्त और कफ है, तो रक्त पित्त वर्गीय है और कफ का चिकित्सा है, तो उसमें कषाय रस रक्त को भी समन करता है, कषाय रस अपने उसको भी कम करता है, इसलिए कषाय औषधियों का ज्यादा प्रयोग किया गया है, ओरली भी और ऐसे। तो इस तरह से ओरल और लोकल मेडिसिन का प्रयोग करते हैं मोस्टली। मैंने तो जो रिजल्ट देखे हैं ज्यादातर अपने क्रायो सर्जरी के बहुत अच्छे रिजल्ट मिले अपने थर्मो से कॉटराइजेशन के। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे अपने अनुभव शेयर किया। क्योंकि आपका रिसर्च वर्क रहा है तो नेचुरली हम लोग को और बहुचित होने की बात बनती है। जो हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स हैं और जो पार्टिसिपेंट्स हैं शायद वो ना पूछ पाए। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जिन पर आपने ये स्पेशली जो कॉटराइजेशन वगैरह कार्य किया, उनमें उन लेडीज को कोई डिस्कम्फर्ट इत्यादि की कोई मैंने कंप्लेंट बताई हो या कुछ ऐसा रहा हो, उसमें आपका क्या अनुभव रहा, या कोई ड्रॉप आउट हुए हो? जी मैंने बताया ना, मेरे उसमें जो फिजिक्स में 32 पेशेंट थे, 32 जी। पेशेंट जब हम कॉटराइजेशन करते थे, कॉटराइजेशन करने के बाद में उसका जो डिस्चार्ज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लिक्विफाइड होकर ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि उसके जो सेल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं एरिया ओपन होने की वजह से, तो डिस्चार्ज बढ़ता था। तब पेशेंट कंप्लेंट करता था कि हमारा डिस्चार्ज बढ़ गया। तो उसमें डिस्चार्ज कितना बढ़ता था उसके लिए भी हम उसके अपने टेम्पून्स होते, वेजनल टेम्पून, उनको उसको रखते थे। रखने के बाद में उसका डिस्चार्ज की वेट करते थे, कितना डिस्चार्ज किसके अंदर निकलता है और कितना रिड्यूस हो रहा है टाइम टू टाइम। फिर धीरे धीरे करके रिड्यूस होता है जैसे जैसे एपिथेलाइजेशन होता है। एक पेशेंट ऐसा था जिसके अंदर हो सकता है उसके हाइजीनिक, पर्सनल हाइजीनिक ठीक नहीं रहा हो, जिसके अंदर मैंने बताया कि उसमें PID भी अपने उसके अंदर डेवलप कर गया था और अपने पुरलेन डिस्चार्ज हो गया था, उसको बाद में ट्रीटमेंट किया गया हालांकि। तो इस तरह के पेशेंट भी मिले हमारे पास में जो सही तरह से अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं करता है, जिसमें अपने इन्फेक्शन हुआ। और इन्फेक्शन किसकी वजह से हुआ, वाइट डिस्चार्ज की अपने सीक्रेशन बढ़ने की वजह से, क्योंकि यह उसके लिए फैसिलिटेट करता है, एक्सेसिव डिस्चार्ज फैसिलिटेट टू द इन्फेक्शन ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन, तो उसका कारण बनता है। तो जिसके अंदर वो मोमनन थी हालांकि, बोरा कमिटी से थी, उसके अंदर उसको मैंने मेंशन किया कि पेशेंट के इस तरह का रहा। तो उसमें जो पेशेंट है अगर इन्फेक्शन होते हैं तो अदर फर्दर जो वे कॉम्प्लिकेशन है, जैसे बैकएक है
ये अभी बताया था डिस्पेरियूनिया होता है, कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग होती है। ये सर्विकल इरोजन के बाद में जब इन्फेक्शियस इरोजन हो जाता है तब ये सिम्टम्स मिलते हैं, अदरवाइज कोई सिम्टम नहीं मिलता है इसके अंदर। और जब पेपिलरी इरोजन होता है, वास्कुलर इरोजन होता है, तब उसमें ब्लीडिंग होती है, तब तक कोई ब्लीडिंग नहीं होती। ओनली एंड ओनली ट्रू लुकोरिया उसके अंदर मिलता है, क्योंकि अंदर लुकोरिया का मतलब है जिसमें किसी तरह के कोई अपने सिर्फ निकोट डिस्चार्ज होता है और कोई उसके अंदर सिम्टम्स मिलते, एचिंग नहीं मिलेगी, बर्निंग नहीं मिलेगी, इरिटेशन नहीं मिलेगा। तो अगर सर्वाइकल इरोजन है तो ये कई बार तो एक्सीडेंटली ये डायग्नोसिस होता है। पेशेंट को जब जांच करते हैं तब एक्सीडेंटली जांच होता है, अदरवाइज पेशेंट अकेला वाइट डिस्चार्ज की कंप्लेंट लेके आता है। तो इस तरह से उसमें कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं अगर सही तरह से उसको डायग्नोस वो सही तरह से मैनेज नहीं किया आफ्टर कोटाइज। हाँ, जो अपने क्रायो सर्जरी की, या मैंने क्रायो सर्जरी ले ली, क्रायो सर्जरी प्रोब ली, उसके बाद उसका प्रयोग किया, तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम थे, पाइल्स के अंदर भी और इसमें सर्वाइकल। चलिए, बहुत बहुत रामवी आभार, सर बहुत बहुत। प्रणाम। सर आपने अभी जो वटी के बारे में बताया कि आपने यूज की थी, PDR 86 करके आपने कुछ बताया और उसके PTR इंग्रेडिएंट्स भी बताए, अशोक, मलकी, दात की प्रदारांतर क्रस्ट, लोद्र, नागकेसर, रसांजन और यष्टि मधु। जी जी। और ये क्या अभी अभी अवेलेबल है क्या सर, या हम लोग बनाए हैं अभी इसको? नहीं, सिर्फ आपने अपने रिसर्च के लिए उस समय बना के रखा था नाम? हमारी यूनिवर्सिटी ने ये बनाया था और थीसिस की मेडिसिन थी, इसका एक्सट्रैक्ट निकाला सबका हमने। और उसमें एक्सट्रैक्ट उसमें अपने इंदौर में निकलता था, सारे एक्सट्रैक्ट हम इंदौर निकालने के लिए लाए थे, क्रूड मेडिसिन लेके, और यूनिवर्सिटी की थीसिस थी। पर इसको उसके बाद में मुझे नहीं कहना चाहिए ओपनली, मगर कह देता हूँ क्योंकि अब तो ये बहुत सारा एक युग निकल गया। बान कंपनी ने फिर उसके अंदर अपने लीकोजिल करके अपने वो कैप्सूल निकाला था इसी इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा सा चेंज कर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत बहुत अपने अनुभव को हम लोगों के साथ शेयर किया। हमारे लिए इस वेबिनार के लिए जो समय निर्धारित तो पूरा हुआ। मैं सर्वप्रथम सबको, हमारे आज की अतिथि वक्ताओं, विशेष रूप से डॉक्टर अनीता और डॉक्टर के वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और धन्यवाद करता हूं डॉक्टर सुधा का, जिन उनके अच्छे संचालन के लिए और उनके कोऑर्डिनेशन के लिए। उन्होंने जो कोऑर्डिनेट किया है प्रोफेसर पामनी दीवान जी का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने अच्छा उनको रिप्रेजेंट किया। और इस वेबिनार से जुड़े हमारे सभी अतिथि वक्ताओं के साथ साथ मंच को जिन्होंने सुशोभित किया, उनमें प्रोफेसर रामवीर शर्मा साहब का बहुत ही सक्रिय योगदान रहा। साथ साथ हमारे डॉक्टर वंदना पाठक जी का, क्वेरी के तौर पर डॉक्टर पवन जी कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। उन सब लोगों ने मिलकर हमारे इस डिस्कशन को, जो हमारा टॉपिक था, बहुत वाइटल बनाया। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो विचार आए, जो डिस्कशन में पॉइंट उठाए गए, उनका समाधान भी निकला। तो ये हमारी वेबिनार पर उपस्थित हमारे अतिथि वक्ताओं को क्रेडिट जाता है और सफलता प्राप्त हुई ऐसा महसूस करते हैं। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इस परिचर्चा में भाग लिया, उनका विशेष रूप से जिन्होंने सफलतापूर्वक अपने प्रेजेंटेशन को आज की डेट में प्रस्तुत किया। और हम चाहेंगे ये मंच उनका है, केवल सैटरडेज को ही नहीं, जब भी उनके इंटरेस्ट का टॉपिक है, IRES के ग्रुप में रोज का रोज डाल दिया जाता है कि आज किस किस टॉपिक पर चर्चा होनी है, तो आप लोग जुड़ा करिए। और निश्चित रूप से वहां भी आपको कुछ ना कुछ एड ऑन करने को मिलेगा नॉलेज का, और कुछ क्वेरीज भी आपके दिमाग में होगी तो वो भी सॉल्व हुआ करेंगी। और रोज ही आपको ग्रुप में ये लिंक और प्लानिंग मिल जाती है, तो उस हिसाब से आप लोग जुड़ेंगे, अच्छा लगेगा। आप सब लोगों का पुनः एक बार धन्यवाद। हमारे साथ में आज रमा देवी जी ने नहीं कुछ चर्चा में भाग लिया, क्योंकि धीरे से उनका हमेशा एक्टिव सक्रिय सपोर्ट हम लोगों को मिलता है। और क्योंकि जो इस फील्ड के सीनियर लोग हैं, तो वो जब हमारे नए स्पीकर्स को सुनते हैं, उनका प्रेजेंटेशन लेते हैं, तो सच्चे अर्थों वो उसको परकस करते हैं, उनकी नॉलेज को, उनकी गहराई को, उनकी अप्रोच को, और उसी हिसाब से ये पता लगता है कि फ्लो कितना अच्छा था, कंटेंट्स कितने अच्छे थे, प्रेजेंटेशन कितना अच्छा था, और साथ साथ उन्होंने स्पॉन्टेनियसली बाद में आए हुए क्वेश्चन का जवाब कितना कॉन्फिडेंटली दिया। ये एक वो असेसमेंट का प्रोसेस है, एक वो नर्सरी है जहाँ यहाँ आपका प्रेजेंटेशन आता है, और उसके बाद आप जब अगले प्रमोशन के लिए या अगले रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो निश्चित रूप से बेटर और एक इंक्रीज नॉलेज की कॉन्सेप्ट में रहते हैं, और विश्वास आपका बढ़ता है कि हाँ, हमने इस विषय पर इतने पेशेंट देखे हैं, इतने ट्रीटमेंट्स हमने ट्रायल लिया है, और आयुर्वेद के नाम पर जब हम MD PhD करके इस विषय को डील करते हैं, तो बड़ी खुशी है
कि मॉडर्न मेडिसिन से निश्चित रूप से डायग्नोज किया हुआ व्यक्ति आपके पास आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए आता है, तो आप सफलतापूर्वक उसको कन्विंस करते हैं और अपनी विचारधारा के साथ में, विचारधारा मैंने इसलिए कहा कि योनि विच्छालन से लेके धूपन से लेके और अग्निकर्म या दग्ध्यावर्ती के रूप में जो आप सपोर्ट देते हैं और काढ़े भी तरह तरह के पिलाते हैं या ओरल थेरेपी देते हैं, तो अक्सर लेडीज में एक एक्सेप्टेबिलिटी की और नानुकुर की एक टेंडेंसी होती है, उस सबको आप सरपास कर देते हैं और ट्रीटमेंट के प्रति उनका झुकाव, रुझान और पैलेटेबिलिटी क्रिएट करते हैं। ये अपने में एक बहुत बड़ी चीज है और आयुर्वेद की दिशा में आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, ये एक लॉन्ग वे, इट विल गो ए लॉन्ग वे, इस हिसाब से कि आप इस दिशा में काम करके उनको पॉजिटिव रिजल्ट दे पा रहे हैं। और विशेष रूप से वे जो कि सफरर होते हैं, वो कह लेंगे आयुर्वेद से ही कुछ हो सकता है, उनको लेके आप स्मॉल वेजाइनल डिस्चार्ज से लेके और इस लेवल तक जो आप ले जाते हैं, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है प्रसूति तंत्र स्त्री रोग विभाग की तरफ से, आयुर्वेद की तरफ से, और निश्चित रूप से हमारे IRES प्लेटफॉर्म को भी आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है। हम IRES प्लेटफॉर्म की तरफ से आप लोगों का धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आप लोग जुड़े और आगे भी जुड़ते रहेंगे, ये हमारा शायद है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू प्रोफेसर पवन शर्मा जी। थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्ते जी, ओवर टू प्रोफेसर पवन शर्मा जी। प्रोफेसर पवन शर्मा जी, हमारे नेक्स्ट वेबिनार के लिए लिंक वगैरह चेंज करें, हमारे स्पीकर्स आ गए हैं या कुछ यंत्र को और लिखा यंत्र, वो जो यंत्र उन्होंने बनाया था शायद, वो आप कुछ लिख रहे हैं मैडम, पाठक लिखते हैं कुछ। जी जी, ये कि इनका जो अपना वहाँ पे जिक्र किया धूपन था ना यंत्र था, कि उन्होंने, हाँ, एक धूपन यंत्र बनाया है, ऐसा कुछ बोला। इनका अपना जो धूपन यंत्र था, तो उसकी पिक अगर ये डाल देंगे फोरम पे तो अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा, हाँ, और डॉक्टर पवन भी तो कुछ कह रहे थे, पवन कुमार की, उन्होंने भी कुछ वीडियोस बनाए हैं अपने नेजल पॉलिप में कुछ अग्निकर्म करते हुए। लेकिन जैसा कि प्रोफेसर रामवीर जी ने क्लियर कर दिया कि वहाँ की म्यूकस लाइनिंग और वहाँ का सॉफ्ट ऑर्गन और नेजल पॉलिप में दोनों में अंतर, वहाँ पर पास मैंने बोनी स्ट्रक्चर बीच में नेजल सेप्टम भी है और सपोर्ट है, और काफी मतलब मैनेजेबल है, इंस्टेड ऑफ यूट्रस पर अप्रोच करना है, वेजाइनल के थ्रू कोशिश करना, वहाँ पर हैंडल विद केयर वाली बात ज्यादा आती है, सॉफ्ट टिश्यू में कोई इंजरी ना हो, तो इसलिए दोनों के में चीजें एट पार नहीं रखी जा सकती हैं, दोनों के लिए अलग अलग अप्रोच रहेगी। तो धूपन वगैरह में और यौन पिच धारण कराने में काफी मैंने सेफर साइड रहती है, वो कार्य इजी गोइंग भी कर सकते हैं। बट मैं तो यही कहूंगा कि अच्छे संस्थानों में जहाँ काम हो रहा है, अय्या हो गया या जामनगर NIA, या आप जहाँ भी आप लोग कर रहे हैं सिद्धार्थ लोग साथ में, तो ज्यादा सर धूपन के लिए डॉक्टर जलगांव में डॉक्टर NN गुजराती है, मेरे क्लासमेट हैं, उन्होंने एक धूपन यंत्र बनाया जिसको उन्होंने पेटेंट भी लिया, 3 पेटेंट उनके नाम से हैं। अच्छा सर, वेरी गुड। बनाया तो धूपन यंत्र उनके यहाँ से दिया जा सकता है, जलगांव में डॉक्टर NN गुजराती। तो धूपन यंत्र सभी धूपन, ब्रण धूपन के अंदर भी काम आता है, ओरल धूपन के लिए भी आता है, योनि धूपन के अंदर भी काम आता है। उसमें जो भी धूपन द्रव्य देनी है तो धूपन द्रव्य उसमें रख देते हैं, उसका धुआं है जो जैसे अपने एवोपरेशन जाता है उस तरह से उसको वहां पे पहुंचता है। बाकी के यंत्र जो बनाते हैं वो उस पे बैठ के बनाते हैं, योनि धूपन करते हैं, वो अलग है। और अगर योनि के अंदर कैनाल के अंदर देना है, योनि के अपने उसमें शीत के अंदर देना है, सर्विस के ऊपर देना है, तो यंत्र से अच्छी तरह से दिया जा सकता है, तो वहाँ पे वो प्राप्त है, उपलब्ध भी है। मैं समझता हूँ सर, ये तो अपना जो हमारे स्वस्वृत्त में आया था अपना धूमपान के मामले में, वहां भी धूमवर्ती, धूम नेत्र और धूम यंत्र एज ए होल जब रखते हैं, तो वो भी एक बहुत ही इनिशियल स्टेज का रहा होगा, इन्होंने उसको और अच्छी टेक्नोलॉजी और ऐसा कुछ मेटल यूज किया हो ज्यादा गर्म ना हो और थोड़ा मैनेजेबल हो। फाइबर का बना हुआ मैकेनिकल है, उसमें क्या है, जो धूम पैदा होता है, फ्यूम पैदा होती है, उसको अपने मोटर के द्वारा उसको अपने उससे निकालते हैं और जाके उसकी जैसी पड़ती है जाके डायरेक्ट ऑर्गन पे पड़ती है। हाँ, तो यही तो सच्चाई है, यही हमारा आयुर्वेद का विस्तारीकरण केवल एकेडमी में ही नहीं है, केवल औषधियों में ही नहीं है, केवल रिसर्च में ही नहीं है, बल्कि उस टेक्नोलॉजी में और इंस्ट्रूमेंट्स और हमारी डिवाइसेस में भी है, जो आगे चल के हमारे कार्य को, हमारे आयुर्वेदिक औषधियों की कार्मिकता को टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन या टू द पॉइंट ऑफ यूज तक ले जाने में सहायता देते हैं, और ये बहुत अच्छी बात। जैसे जहाँ भी सर वो एड्रेस प्लीज फोरम पे डलवा दीजिएगा। जलगांव के डॉक्टर साहब बताया इन्होंने। हाँ, डॉक्टर NN गुजराती है।
और एन उनका गुजराती, अच्छा। सेंटर है धन्वंतरी पंचकर्म सेंटर जलगांव। पवन जी को गुजरात। मालूम है, पवन जी की भी हमारे साथी है, तो उन्होंने जानकारी है उनके पूरे। अच्छा। और आज ही एक और चलिए। पेटेंट हुआ नाड़ी यंत्र के ऊपर, जो अपने आईआईटी बॉम्बे के साथ में हुआ है, डॉक्टर संजय छाजेड़ जी का जी। चलिए, बहुत अच्छी जानी मिलती। यही हमारा, जो मेरा सच्चा अर्थों में देखा जाए जो रोल है IRES प्लेटफॉर्म का, वो यही है कि देश विदेश से सभी लोग जुड़ते हैं, सभी नॉलेजेबल होते हैं और उनके पास कुछ ना कुछ शेयर करने को होता है। अब वो शेयरिंग होने के बाद वो जनरलाइज हो जाती है पूरे प्लेटफॉर्म को, अब पूरे दर्शक श्रोता और हमारे ऑफकोर्स हमारे वीडियोज में भी, तो आगे कभी भी उससे हम चीजें निकाल सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पुनः हम करते हैं। मैं शायद अगली वेबिनार के डॉक्टर सैकत कुमार बसु जी पधार चुके हैं, आ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और ओवर टू प्रोफेसर पवन शर्मा जी, आप लिंक चेंज करिए। अगला हमारा विषय है फिश के लिए, फिश डे पर, तो आप लोग जुड़े रहें, आपको उसमें भी कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग जानकारियां मिलेंगी। तो प्रोफेसर पवन शर्मा जी, ओवर टू प्रोफेसर पवन शर्मा जी, आप अपना इसका लिंक, इसको कंक्लूड कर दिया है हम लोगों ने, सबका एक बार धन्यवाद करते हुए, और आप लिंक चेंज करिए अगली वेबिनार के लिए। डॉक्टर सैकत कुमार बसु जी आ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। फोन करना पड़ेगा तो कहीं भूला न। हरिओम सर, हरिओम सर, हरिओम, हरिओम, हरिओम। अग्निहोत्री सर, हरिओम, आवाज आई? हाँ हाँ हाँ, आप लिंक चेंज कर दिए या पहली वाली कंक्लूड कर दिए। हमारे नए स्पीकर डॉक्टर सैकत कुमार बसु जी आ गए हैं, उनका स्वागत है जी। इसका अगले जो फिश वाली है ना, उसको शुरू कर दीजिए। नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार। बंगाली को फिश वाले टॉपिक कंक्लूड में कीजिए, आपने मैं इनवाइट 1 मिनट किया में है। चेंज कर रहा हूँ। क्या बात। बंगाल फिश तो बिल्कुल हैंड एंड हैंकी वाला हिसाब है। कैसे हैं सैकत जी? मैडम ने नहीं ज्वाइन किया क्या? नहीं, इनवाइट तो कर रखा है, अभी तो नहीं ज्वाइन किया उन्होंने।